significant railway land. That is basically the land along the railway tracks. That is practically the majority of the land which is shown as railway land available is basically along the railway tracks. That is kept reserved for expansion. As noticed in the budget, Honorable Prime Minister has very big vision for expansion of railway network. 3 major corridors have been approved, which will basically add about 40,000 kilometers. 40,000 किलोमीटर और रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगा और किस तरह से एक तेजी से रेलवे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. So, Honorable Speaker, sir, most of the railway land is basically reserved for expansion. Outside that, whatever railway land is available is being taken up for development in various phases. Many interesting projects have been done in the recent past. In the last 10 years, some of these railway lands have been developed as housing complexes, some have been developed in other ways, but we are moving in a very systematic way, sir. Okay, Muralidharan ji. Sir, whether the government should consider these 50 acres land in Talisheri for the development of the railway? Members' suggestion is noted, sir. Deepak Ved ji. Manikam Tagore ji. Sir, Railway launched Amit Bharat station scheme for the development of the stations. As the it's among 118 stations are among that thing, as the reply Honorable Minister has replied. Aspirational districts. Is there any specific plan to include more stations in aspirational district? Because aspirational district is which are all backward districts, and we all know that there needs special support for that. And my district is an aspirational district, and Sivakasi and Arupukote stations are not included in this scheme. And I like to request the Honorable Minister, will he consider including Sivakasi, which is a fireworks hub, and Arupukote, which is a handloom hub, to be included in the Amit Bharat station scheme? Thank you, sir. जी, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा. प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम हाथ में लिया है, एक तरीके से भागीरथी काम हाथ में लिया है. 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट एक साथ आज चल रहा है और काम जिस तेजी से चल रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, देश में सौभाग्य मिला कई जगह स्टेशंस को ढंग से जाके देखने का. काम जिस तेजी से चल रहा है वो अपने आप में एक सुखदायक चीज़ है. आपके स्वयं के कोटा स्टेशन में भी अगर देखें, और देश भर में कई जगह, भुवनेश्वर देखिए, अलमपुर देखिए, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह, जैसलमेर, उधमपुर, जब कई मान्यवर सदस्यों के स्टेशंस जो बन रहे हैं, बहुत ही तेजी से काम हो रहा है. 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट का एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट विश्व में कहीं पर शायद नहीं लिया गया होगा. ये इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम है, ये और अच्छा प्रोग्रेस हो जाए, इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आ रही है. माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शहर के दोनों हिस्सों को जोड़े और एक बहुत अच्छा रूफ प्लाजा बने, नई अर्बन स्पेस बने, वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से साकार हो रही है. I.B. Eden जी. सर, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं. सर, आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपके भी ग्रीन सिग्नल चाहिए. सर, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड दिस इशू टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. इट इज रिगार्डिंग 110 acres of land in my constituency in Ernakulam, which the Indian Railway owns. This is a marshalling yard, and as we all know that the Ernakulam town and junction railway stations have been in a stagnant position, and the only way to develop the railways in Kerala is to develop this particular railway station, where inside the heart of the city you have 110 acres of land. The Railway Land Development Authority, RLDA, have made a study on this. A detailed project report has been made. I hope the Honorable Minister and the government would consider this matter very positively. Also, sir, what is the present status of the Shabari Rail project in Kerala? Is the government intending to take up the project, or government has dropped the projects? Honorable Speaker, sir, the Shabari Rail project is another classic case study in which after so many years of effort,
because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made. Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabri shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honourable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. In Kerala government is in Indi block. सर मैं आभारी हूं सर कि आपने पूरे प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर मैं सबसे पहले तो अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, 10 साल की सरकार, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तेलंगाना स्टेशन का। सर काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूँगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दानापुर मंडल भी है सर, वहाँ पर बेटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके सर। माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछें, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे कैसे चलेगा बताओ? पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया, पैसेंजर। चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य में प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफिकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके कई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए मैं मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं मान्यवर सांसद जी से निवेदन करता हूँ एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो चैम्बर में बात कर लेना आप। अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया, उसकी सराहना करता हूँ। एक मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया, आपने इसमें उसका भी प्रावधान किया, ऐसा मुझे समझ में आया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक ही दरखास्त है, विनती है, बहुत सालों से करते आया हूँ कि वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाएंगे। वो जवाब देते हमारे पास पॉलिसी नहीं है। केवड़िया पे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, म्यूरल भी बनाया हुआ है। विश्वेश्वरैया पे विश्वेश्वरैया का भी स्टैचू बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अगर स्टेशन के सामने, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस न पहुंचाते हुए बिठाने की कोशिश करनी है। मैंने उनको प्लान भी दिया, डिजाइन भी दी थी। आप अगर उसकी अनुमति देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के ऐसे गौरवशाली, ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष रहे जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना नाम एक बहुत ही गौरव, बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में रखा है। हम लोग तो बचपन से शिवाजी महाराज की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। उस स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी। काम आरंभ हो गया है और ऐसा माननीय अध्यक्ष जी काम का जो डिज़ाइन हुआ है, मैं आपके सामने
रखना चाहूँगा कि उस डिज़ाइन को जैसे कंप्लीट होगा ये काम आरंभ हो चुका है, लोग स्टेशन को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री पशुपतिनाथ सिंह जी। एक विशेषता थी कि कोई भी अगर उनको धोखा देता था तो वो उससे पूरा बदला भी लेते थे। पशुपतिनाथ सिंह जी प्रश्न संख्या 67 पूछता हूँ। माननीय मंत्री। Laid on the table of the house, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज़ादी के बाद 2014-65 वर्षों में कोयला का उत्पादन 462 मिलियन टन प्रतिवर्ष होना शुरू हुआ था और आज 10 वर्षों में वह दुगना से अधिक हो गए। 893.19 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होना शुरू हो गया। देश के समृद्धि में कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब यह रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ तब ओबी डंप की समस्या आई, क्योंकि ज़्यादा ओपन कास्ट से कोयला निकालकर और बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। समय 12 बजने वाला है, इसलिए शॉर्ट पूछ लेंगे तो जवाब दे देंगे। एक तो बहुत मुश्किल से अध्यक्ष महोदय, कई बार कोशिश किया। नहीं, मैं तो आपके हित के लिए कह रहा हूं, अगर आप शॉर्ट पूछ लो जवाब दे देंगे। बहुत संक्षिप्त में है। हाँ, बहुत संक्षिप्त में है। मैं बात भी करता हूं बहुत संक्षिप्त। अब ओबी डंप की समस्या भौगोलिक स्थिति बदल दिया कोलफील्ड का। कहीं तालाब हो गए, कहीं पहाड़ हो गया और वहाँ कोयला में आग लगी हुई है, विस्थापन की समस्या है। राज्य सरकार इनको जमीन उपलब्ध नहीं करे। हमारा प्रश्न है कि यह नियमानुकूल है कि कोई रहती लैंड कोई देता है, अधिग्रहण होता है, तो कोयला उत्पादन करने के बाद उसको समतल बनाकर और उसको वापस कर दिया जाए। क्या इस पर सरकार विचार रखती है? सर, जैसे माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि कोयला प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था, जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं सर। वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ जो ओबी रिमूवल जो है, ओबी बर्डन जो है, तो एक इशू है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है और रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं ओबी डंप्स का, उसका ज्योमेट्री कैसा है, स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी, इसका भी उपयोग कई जगह हो रहा है, लेकिन पूरा उसका फ्लैटनिंग करके रिफिल करके हमको वापस करने का पॉलिसी आज के दिन में हमारे नहीं है, क्योंकि उसके एक बार ओपन कास्ट में माइनिंग पूरा करने के बाद रिफिल करने के लिए, और रिफिल करने के बाद वो नीचे गिरता है, इसके कारण बहुत समय लगता है। और उसमें हमने इको पार्क बनाया है, उससे जो सैंड उत्पन्न होता है, बालू, वो बालू हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उसे ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं सोलार पार्क्स, जो अभी ओबी साइड जो है उसका सोलार पार्क भी उसके ऊपर लगाने का कंसिडरेशन में है। तो ओवरऑल तो जो लैंड कैसे उपयोग करे, इको पार्क कैसे करे, ये सब सोच रहे हैं, लेकिन ये रिस्की रहता है, इसलिए फ्लैटन करके वापस करने का अभी तो सोच सरकार के सामने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 के सुरेश जी। सर, क्वेश्चन नंबर 68 स्टेटमेंट
आप 1 सेकंड में पूछो, 1 सेकंड में जवाब। Honorable Speaker, sir. Sir, myself. आप पूछ ले, कोई बात। Sir, first of all, I would like to congratulate Honorable Railway Minister to take up various railway stations for redevelopments. Sir, in my constituency, Mavelikara, also included in the Amrit Bharat scheme. The tender has been floated. Unfortunately, that tender was cancelled. Now the work has been delayed. So I would like to ask the Honourable Minister when this work will be restarted. And also Chenganur is the gateway of Shabarimala. That railway station also included the second phase of the redevelopment, but work has been not taken up. These two important questions, Honourable Minister kindly reply. Honourable Speaker, sir, Honourable member has asked a very specific question about the Mavelikara railway station. Unfortunately, the first tender which was awarded, that was not performed and the tender had to be cancelled. Already a fresh tender has been issued, sir. Supplementary, chalo. There is a proposal from Chenganur to Pamba, elevated railway line. So, what is the present situation? Whether the survey is over, alignment has been finalized, the project has been approved by the railway board. When this railway line will be started the work? Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is fully committed towards development of railway network in Kerala, and one of the projects which is very important is the project which takes the railway network to the holy shrine of Shabarimala. The Chenganur to Pamba railway line is a new alignment which has been suggested by Dr. E. Sridharan Saab. The DPR is right now under preparation, sir, and as and when the alignments are frozen and DPR is completed, then the next steps will be taken. Okay, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कार्य को निपटान हेतु 7वीं लोकसभा के 15वें सत्र को शनिवार दिनांक 10 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। यदि सभा की अनुमति हो तो शनिवार 10 फरवरी 2024 तक सदन की बैठक निर्धारित की जाए। बढ़ा दिया जाए। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपकी संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 2 के आगे मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3, फगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4, श्री राव साहेब दानवे। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, साध्वी निरंजन ज्योति जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राजीव चंद्रशेखर जी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, श्रीमती दर्शना जयदोष।
Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at serial number 8 of the Ministry of Textiles as the today's revised list of business. Item number 9, Sri Arjun Ram Meghwal जी. धन्यवाद सभापति महोदय। लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 9 पर श्री वी मुरलीधरन जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित कागजात उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Item number 10, Sri Som Prakash. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 10 in the revised list of business for today. Item number 11, Sri Debu Singh Chauhan. धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 12, Dr. Sanjay Jaiswal. सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 37 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। Item number 13, Sri Adhir Ranjan Chaudhary. Sir, I rise to present the report number 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 and 103rd Indian English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's revised list of business at serial number 30. The PSC has completed a century. Credit goes to the chairman. Item number 14, Bhavna Gavli. पति जी, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। Item number 15, PC Gadegora ji. With your kind permission, I rise to present a copy of the each 67, 68, 69 and 70th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2023-24 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Item number 16, Sri PC Gadegora ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay a copy of each of the statement, Hindi and English versions, showing action taken by the government on 62nd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, as listed against my name at serial number 16 in today's list of business. Item number 17, Sri PP Chaudhary ji. Sir, with your permission, I present the following reports, Hindi and English versions of the Committee on External Affairs 17 Lok Sabha. Number 1, 29th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 24th report of the Committee on External Affairs on the subject, India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS. Second, 30th report on action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 22nd report of the Committee on External Affairs on the subject India's neighborhood first policy. Item number 18, Srimati Lockett Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I beg to present the 39th and 14th reports, Hindi or English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 19, Sri Radha Mohan Singh ji. क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 20, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir,
I am to present the 53rd, 54th, 55th, 56th, 57th and 58th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 20 in today's order paper. Item number 21, Sri Pallav Lochan Das ji. Sir, I rise to lay 6 statement, Hindi and English version of Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development as listed against my name, serial number 21 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 22, Sri Raghuram Krishna Raju. Thank you, Honorable Chairman, sir. I beg to lay on table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. 141st report on the subject Judicial Infrastructure in the Northeastern States of India. 142nd report on the subject Strengthening Legal Education in View of Emerging Challenges Before the Legal Profession. 143rd report on the subject Review of the Working of Legal Aid under the Legal Services Authorities Act 1987 and 144th report on action taken on 133rd report of the committee on the subject judicial processes and their reforms pertaining to Department of Justice, Ministry of Law and Justice. Thank you, sir. Item number 23, Dr. Jitendra Singh. Permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 326th report of the Standing Committee on Science, Technology and Environment, Forests and Climate Change on demands for grants 2020-21, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. 2. The status of implementation of these recommendations contained in the 334th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 326th report of the Committee on Demands for Grants 2020-21 pertaining to the Department of Atomic Energy. Number 3, the status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demands for grant 2021-22, demand number 03 pertaining to the Department of Atomic Energy. Thank you, Speaker, sir. Item number 24, Sri Rao Sahib Danve. सभापति महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधित संसदीय समिति के 7वें सभ्य में अंतरिक्ष परिषद के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं। Item number 25, Sri Som Prakash ji. Respected Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 182nd report of the Standing Committee on Commerce on Ecosystem of Startup to Benefit India pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. धन्यवाद. श्री अजय भट्ट जी. Item number 26, Sri Ajay Bhatt ji. Okay. Arjunram Meghwal. Sir, Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague, Sri Ajay Bhatt, regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 35th, 36th, 37th and 38th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to the demand for grants, that is demand number 19, 20, 21, 22 of the Ministry of Defence for the year 2023-24. Thank you. Dhanyavad. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Now we take up item number 28 से 33 तक एक साथ. Now Dr. Shashi Tharoor ji. Minister, sir. Where is Minister, sir? Where?
What is this, sir? Please, we cannot start this, sir. What norms are you sending? Where is the union minister? Where is the union minister? You are starting a budget. ये क्या दिखाना चाहते हैं, sir? You walk out otherwise, sir. What is this, sir? ये क्या है, sir? Union minister नहीं है बजट में. ये क्या दिखाना चाहते हैं? Where is the union finance minister? Shame on this government, sir. Shame on this government. They making a mockery. प्रहलाद जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद इनको इतना एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है कि सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हैं, पंकज जी हमारे वरिष्ठ MOS है फाइनेंस के, उसके बाद इस प्रकार की बात उठाना दिखाते हैं कितना खोखला हो गया है कांग्रेस की सोच। It should go on record, sir. Premchandran ji. It should go on record. Premchandran ji. Sir, the House is run by precedents and conventions. The convention of this Lok Sabha, the tradition of the Lok Sabha, when the general discussion on the budget takes place, normally it is the courtesy on the part of the Union Cabinet Minister to be present in the House. It is quite unfortunate that the minister is absent. It is quite unfortunate. Sir, the same. I am pleading for the courtesy convention protocol. That should be maintained. Parliamentary affairs. No. Okay, Adil, the girls let me. Sir, it is. Let us not have a debate. Let us not have a debate. Already the government has taken note of it, and the MOS is competent enough. But no, that is not the case. That is not the case. That is not the case. Allow Dr. Shashi Tharoor to speak. Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, please. Parliamentary affairs Let us is not taking the role seriously. Not to finish up the parliamentary democracy in this country. Sir. Dr. Shashi Tharoor ji. Sir, I join my colleagues in deploring the absence of the Honourable Finance Minister. No, she's not absent. Who had actually introduced the interim budget She's coming. last week. Already it has been But I coming. will nonetheless initiate the debate on behalf of my party. The budget comes at a very crucial moment for our country. We are shortly heading to the polls to decide who should lead the nation. But on what basis will the people come to this decision? Because when in 2014 they did offer a mandate to this current ruling dispensation, they did so with the hope that the government would come through on its bloated rhetoric of Sabka Saath, Sabka Vikas, the illusory promise of inclusive development for all Indians. Now fast forward 10 years later, sir, and we find the people of this country have been sadly betrayed by a government whose economic mismanagement in this past decade has left the people of India staring at widespread distress, hardship, low incomes and high unemployment. The first glimpse of their economic ineptitude came with the reckless decision of demonetization that broke the back of the Indian economy and resulted in a monumental disaster where poor and middle-class citizens suffered and in several cases even died while waiting in long lines to convert their notes, while the wealthy friends of the government managed to exchange their currency with ease. We must also not forget the sudden no-notice lockdown of 24 March 2020, imposed without warning or planning, which led to lakhs of migrant workers walking, trudging thousands of miles, kilometers back to their homes. During that national lockdown, sir, the most stringent in the world, between April and May 2020, individual income in India dropped by 40%. The bottom 10% of households lost 3 months' worth of income. Over its first 2 terms, this government demonstrated that its specialty was to issue policies marked by haste, incompetence and complete disregard for its own citizens. Just 1 minute. The House has taken up the discussion and voting on demand for grants on account for the year 24-25. Sri Suresh Kodinunil and Srimati Aparupa Podar have tabled cut motions on the demand for grants on account. If the honourable members want to move their cut motions, they may send a slip at the table within 15 minutes, indicating the serial number of the cut motions they would like to move. A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved
will be put up on the notice board shortly thereafter. In case the members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the officer at the table immediately. Now proceed, Dr. Sir. I'll resume, sir, where I left off, and welcome the Finance Minister to this House. If demonetization was a bad policy, badly implemented, GST was a good idea, badly designed and shabbily implemented. The goods and services tax has been used to trample over the financial autonomy of our states, and when coupled with demonetization, it resulted in finishing off India's job-generating small, micro and medium businesses. It caused a 45-year unemployment high and ended the economic recovery that had begun in 2013, all while failing to achieve any of its stated objectives. Ordinary Indians have suffered, sir. Even the GST tax slabs on basic commodities like toothpaste, 5%, footwear, 18%, shirt and pants, 5%, rice and wheat, 5%. Instead of flushing out black money, it simply resulted in concentrating wealth in the hands of the government at the expense of the Aam Aadmi. So any talk of a robust economy and of GDP growth cannot be abstract or theoretical, but must be rooted and centered in the welfare of the people of India, who are the principal stakeholders of our economic progress. The question is, who are the people the government is serving? The Finance Minister mentioned 4 quote-unquote castes that the government supposedly looks after, namely the Garib, poor, Mahilayen, women, Yuva, youth, and Annadata, farmers. She said that their needs and aspirations and welfare are the government's highest priority. However, all 4 groups are some of the worst performing groups in the most categories you can find for social and economic policy performance. Let's begin with the Yuva. There is a tragic irony in the government's claims of success when desperate young people are queuing up to risk their lives in Israel in the middle of a war because they have no decent work in India. The unprecedented levels of unemployment have left countless citizens, especially our young workforce, with few prospects for a brighter tomorrow. Overall, an unemployment rate of 8 to 9% has become the new normal in our country. Unemployment reached a 45-year high in 2017, currently stands at 7.3% according to CMIE data, but has crossed 8% just a few months ago. Worse, the unemployment rate amongst youth aged 20 to 24 stood at 45.4%, sir, in 22-23. The Indian economy actually employs fewer people today than it employed in 2012. The data we have actually for the government is only 2018 and 2012, but that's where we have it. We employ fewer people. Agriculture and manufacturing jobs have gone down. Financially precarious construction work and low-end service roles are the only ones where they've seen any sort of employment. No wonder people are so prepared to risk their life and limb for a job in Israel, risking dying to make a living, sir. That's what our young people have been reduced to. Periodic labour force survey data shows that regular salaried employment has stagnated for 5 years. Talk of self-employment, which the government does, is a cop-out, because most of the self-employment is unpaid family labour, which is disguised unemployment. Experts reckon that the growing army of self-employed in any case constitutes very low-quality employment, and unpaid workers have increased from 40 million in 2017 to 95 million last year. You can call them self-employed, but unpaid workers are not counted as employed by the ILO, the International Labour Organization. Now, the share of agriculture in total employment has gone up, which is an indication that there are not enough jobs available outside of agriculture. To this, the government offers schemes like Skill India as a palliative. Skill India has set out a goal of skilling 40 crore workers by 2022, but if you look at the grand total trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, it is 1.3 crore, not 40 crore. And of that 1.3, only 24 lakh people have been placed in jobs. Skill India has been a failure, sir. The workforce share that was formerly vocationally educated trained in 2012 was 2.3%. In 2023, after 10 years of this government, the share has gone from 2.3 to 2.4%. What should we say? Congratulations. All this crying about Yuva Shakti.
the truth is that their future looks bleak, sir. Affairs Minister is disrupting the Finance Minister. Sir, here is one landed member speaking, please. Have the courtesy to listen. The Finance Minister doesn't wish to hear any uncomfortable truth, sir. It's pre-planned, sir. This is pre-planned. Please. The young people of our country are facing a double whammy. Falling labour participation rates and shockingly high unemployment, as I've just described, while the minister was otherwise occupied. Government praises the start-up culture as an alternative, but fund-starved start-ups fired nearly 18,000 people in 2022. Start-up fundraising activity is so subdued, sir, that in all Indian startups put together raised just $1.1 billion in January, down 75% compared to January of the previous year. Let's turn to MSMEs. They've been the main employment generators in this country, but they also find themselves shrinking in today's economy. Many were permanently closed after the disastrous demonetization. In 2016, we had 6.25 crore MSMEs. The number has dwindled to now 3.25 crore, as per the government's own Udayam portal, the MSME registration portal. More than 60% of the conventional micro-enterprises in our country, which were engaged in business activities for more than 10 years, have perished. They've been closed, sir. So that's the picture we are seeing. What is the state of employment generation? We have to ask the government, kiska saath or kiska vikas? The question again brings me to yet another aspect of the government's underperformance, woefully ignored in the Honourable Finance Minister's speech. She said people are living better and earning better. Average real income, she said, has increased by 50%. But first, there's no data available on individual household income. So how does the government say it's increased by 50%? If she's merely talking per capita GDP, sir, that is not a valid comparison, as per capita GDP will go up on the basis of people who are rich at the top of the pyramid without actually affecting the incomes of those at the bottom. If Mr. Adani and Mr. Ambani walked into this chamber right now, every MP would discover that our per capita income has gone up. Right? But the moment they leave this room, we would all revert to reality. That's the problem with using per capita as her guide. A critical appraisal reveals that technically some incomes have gone up on per capita basis, but if you are middle class, lower middle class or poor, your incomes have shrunk. That's the inequality in our country today. There's a Reuters survey this month, sir, stating that over 85% of the interviewed families reported stagnant or lower incomes compared to the years before the pandemic. Post-pandemic, the poorest 20% households in India saw income levels shrink 52% from their 2015 levels. And this is as per the latest India's Consumer Economic Survey. Compare this with the pre-2014 period that the Finance Minister put so much effort to discredit. During UPA 2, 2009 to 14, real agriculture rural wages grew at 8.6%. In contrast, during NDA 1, growth of real farm wages decelerated to 3.3%, and under NDA 2, the annual growth rate of real rural wages has become negative, sir. Can you give the exact thing? Agriculture wages minus 0.6%, non-agricultural minus 1.4%. So rural India is suffering reduced income, sir. Overall, when you compare income growth by income group from 2016 to 2022 in India, the top 20% of the rich have seen almost a 40% rise in their income growth, while the bottom 60% of our population have all seen negative income growth. There's also been a sharp fall in household savings because real incomes have declined. So let's look at the Garib. I'm looking at each of these castes, quote-unquote, that she mentioned. The government claims it made 25 crore people free from multidimensional poverty in the last 10 years. Now that claim has to be interrogated. First, if 25 crore have indeed been freed from poverty, why are 81 crore still receiving free food grains? Second, how is the government expecting us to trust their number when consumption expenditure surveys were not done from 2014 onwards to 2022 and the National Multidimensional Poverty Index has been attacked by experts here and abroad who question both the manner and methodology with which it is calculated? The truth is the government's record is disillusioning. The UPA era created the fastest ever decline of poverty levels in India's history between 2005 and 15, whereby 271 million or 27.1 crore Indians were lifted out of poverty
providing what UNDP called the greatest relative development for the poorest 40% during this period. Under the BJP, I'm still quoting international sources, 230 million Indians, or 23 crore, slipped into poverty during the pandemic, and according to the World Bank, an astounding 80% of the world's people who slipped into poverty in 2020 during the pandemic were from India. 80%, going below the poverty line, were from India. But there's worse. The National Survey Organization has not conducted its quinquennial national consumption expenditure surveys to identify the proportion of people below the poverty line. The global poverty line at one point was $1 a day, now it's $2, according to World Bank and UN figures. But in India, despite all the government's tall claims of growth, the official national poverty line is very low, at rupees 1,286 per month per person in urban areas and 1,059 per month per person in rural areas. Has the government raised 25 crore people above these levels? There's no indication. The Indian government has conducted no survey, neither a national consumption expenditure survey, and of course no national census either. We are in a statistical void, and what we only have is this multidimensional poverty index of the Niti Aayog, which is a new index they have created, which cannot be compared with any past poverty numbers. We have absolutely no basis for judging whether poverty has actually gone down, as the finance minister claims. As we all know, on issue after issue, NDA apparently stands for no data available. Now, one of the greatest disservices that this government has done to India is that a country which enjoyed a global reputation for reliable statistics is no longer trusted on its numbers, from COVID death claims to real-life economic indicators. These are really horribly disenchanting figures that seek to mask but in fact reveal the government's mismanagement of our economy. The finance minister calls inflation moderate, but the fact is he's not acknowledging that the Indian middle class and poor have been left defenseless in the face of rising inflation. Retail inflation measured by the CPI rose to a 15-month high of 7.44% in July 2023. But a recent survey by the data analytics firm Kantar found that 57% of Indians are worried about rising inflation. Look at wholesale market prices from December 2023, just a month ago, 19.6% higher when compared with the same month the previous year. Paddy became costlier by 10.5%, milk by 7%, vegetables by 26.3% year on year. And this is linked to growing nutritional concerns. The State of Food Security and Nutrition in the World report, another unimpeachable international document, says that a significant 74.1% of India's population cannot afford healthy food. This translates to over 100 crore people in India facing a crisis of inadequate nutrition, and it's a distressing number that is substantiated by our dropping to the 111th rank out of 125 countries in the 2023 Global Hunger Index. Even in the latest interim budget speech, the finance minister spent a lot of time celebrating the success of GST amassing a lot of revenues. But her speech was not punctuated this year with any verses or shairis, not even from Tiruvallur. So I prompted a poet friend of mine to put the plight of the suffering it caused the Aam Aadmi into verse. And I'd like to share it with her to italicize the really sad state of the Indian economy from the point of view of a common man like this Kavi. कर्ज के बोझ से आम आदमी तर-तर हो गया, महंगा हो गया खाना पीना, महंगा घर हो गया. मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं. सिर से करके शुरू, चलो पैरों तक जाते हैं. कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए. माना आप डाई नहीं करते, पर कहीं तो करते हैं. इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं. चश्मे के दामों को सुन, आंखें रो गई. कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई. बाल कटाने से भी हम अब कटने लग गए. बिना क्रीम के हाथ पैर भी फटने लग गए. फट गई कमीज की कॉलर, पर नहीं तो नहीं ले नहीं सकते. जीएसटी इतना ज्यादा है हम दे नहीं सकते. पूछ रहा था कोई, हम वजन कैसे घटाते हैं.
जब से सब्जियों के दाम बढ़े हम कम से खाते हैं। दिखा के लॉलीपॉप वो भरमा कर चले गए, इस बार भी वो अपने ही गुण गाकर चले गए। कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी, कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी, इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी। That, sir, is the plight of the Aam Aadmi. Others who can are voting with their feet. The External Affairs Minister told Parliament that over 16 lakh Indians gave up their citizenship, including 2,25,000 in 2022 alone. High net worth Indians are leaving the country because of this government's tax terrorism. 7,500 millionaires left India in 2022, 6,500 last year. They have taken their resources to invest them abroad and not in our country, where private investment is seriously down under the NDA government. The FM's claims of human development don't stand the test of objective scrutiny either. She claimed that a large number of new institutions of higher learning, especially AIIMS, IITs, IIMs, are being set up. As I've said in the House innumerable times, the problem with this government is not ideation. It's a delivery of public services and the implementation of grand policy announcements. In this case, too, the government has failed to ensure proper execution. Look at the AIIMS, for example. In some cases, only land is allotted. Nothing is done beyond that. Sometimes even that clearance takes years. In Madurai, the approval to construct an AIIMS came 5 years after the PM laid the foundation stone in 2019. In my own state of Kerala, we are still waiting for the establishment of an AIIMS to boost the quality of medical services for our residents. In other cases like AIIMS Bhubaneswar, posts are lying vacant and nothing has been operationalized. Now, another major axis of the government's self-congratulation was the efficacy of its various schemes for the poor. They're very nicely named and so on. But that too is a delusion that requires a sobering reality check. In the last fiscal year, for which we have numbers, 90 lakh beneficiaries of the government's flagship Pradhan Mantri Ujjwala Yojana did not refill their cylinders. Data revealed through an RTI showed that of the 9.58 crore PM Ujjwala Yojana households, 1.8 crore brought no refills, while another 1.51 crore bought just one refill. But the government does nothing to make the cylinders more affordable to ordinary people. It's all headline management, bottom line mismanagement. In fact, most of the government's successes actually letdowns. Jan Dhan, 51 crore Jan Dhan accounts were created, but over 20% of them are inoperative as of December 23, last month, just a month ago. Nearly half the inoperative accounts belong to women. So much for Nari Shakti. Ayushman Bharat, in August 2023, the CAG found that 43,000 crore had been misappropriated in the Ayushman Bharat scheme. Manrega, which the Prime Minister had disparaged in his first Lok Sabha speech of 2014. Demand for Manrega continues to be higher even than pre-COVID levels, despite the low wages being given and the various bottlenecks in accessing the scheme. Between April and December 2023, just the last 6-month phase, a record 231.34 crore person days were generated across all states, at a time when the government had drastically reduced the budget for the scheme by 33% in the last budget. They then had to seek supplementary funds of 16,000 crore in December. If the economy is so good, if jobs are so plentiful, why did the revised estimate for Manrega 2023-24 increase by 43% compared to the budget estimate? Let's turn to the Annadatta. Close to 689 lakh farmers enrolled under the Fasal Bima Yojana during the 2023 season. Claims were only paid to 7.8 lakh farmers. Are you supporting your applicants or not? The number of beneficiaries enrolled under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana decreased from 11.84 crores in 2019 to 3.78 crores in 22, marking a 67% decline, sir. And CAG tells us over 3,000 crores were reportedly siphoned away from the PM Kisan scheme through the creation of fake beneficiaries using publicly available Aadhaar details. In fact, the total expenditure
to the Ministry of Agriculture and schemes related to farmers' welfare has been declining as a percentage of the total budget outlay since 2019. And during this government's period from 2014 to 2022, at least 1 lakh farmers have committed suicide, as per recently released National Crime Records Bureau report. This amounts to a scary 30 suicides per day, every day that BJP has been in power, sir, in the last 9 years. The Prime Minister's promise to double the income of farmers between 2015 and 2022 lies in shambles. They've stopped repeating it. The headlines were made at one time, now they've not been repeating it or fulfilling it, sir. The issue has disappeared completely from policy making, while the real incomes of agricultural households from cultivation has fallen, as I said, by 1.4%. Now, the Finance Minister also made a big deal about the blue revolution in the fishery sector, a sector where the government actually doesn't have much to boast about. I can tell you because most of the fishermen in my constituency are living below the poverty line, and the budget allocation for the sector has been raised for the entire country by a meagre 134 crore. The government claims to have doubled pisciculture and aquaculture. Absolutely no evidence of this. And the PM himself talked about creating a Ministry of Fisheries, but they've only created a Department of Fisheries, which is part of a larger ministry. I've never heard of a government that actually breaks its own promise and then claims credit for it. They have promised a ministry for 2 successive elections. They have never given a full ministry to the fisher folk and our coastal region. The rhetoric surrounding Nari Shakti for the Mahila also requires additional debunking to what I've already said earlier. While we in the opposition welcome the women's reservation law, we are deeply sceptical about the vague timeline of the government, but equally representation is not enough in isolation. We know that grand announcements alone don't help women. We need policies that will help them get the resources they need. Consider, for example, the Integrated Child Development Services. You've rebranded it, of course, your phraseology is always great, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. But your budget for integrated child development has actually declined, even while new labels are coming. We have gone in the course of the Modi government's existence to reduce money available for child development. Similarly, while the government's claims of an increase in the number of women participating in the labour force tries to paint a positive picture, the truth is that the rise has only been post-pandemic because women had dropped out of the force during the pandemic in very large numbers, and women are doing tedious, low-paid or unemployed work. I beg your pardon, unpaid work, which is technically unemployment in this country. India ranks 127 out of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2023, a searing indictment of our inability to provide the space that our women need to survive and thrive in the labour force. So much then for all the claims of empowering the Garib, the Mahilayen, the Yuva, the Annadata. Contextualizing the FM's budget speech in the highly competitive global environment yields even more evidence of policy failure. The Finance Minister argued that India's economic development has been good, even... I'm sorry? You have already completed 25 minutes. 5 minutes more, sir. I'll quickly wrap up. The Finance Minister has argued that India's economic development has been good, even as GDP growth averages a modest rate post-COVID. Our post-COVID growth has actually been lower even than Bangladesh, Vietnam, and even until very recently China. So what worries me more is the sharp uptick in the gross debt to GDP ratio, which has invited concerns from the IMF that I hope the Minister will address. The government has also missed its disinvestment target for the 5th year in a row. I'm just summarizing my last few points for you, sir. The trend of rising governmental debt in the last 10-year period has been very worrying because high debt, accompanied by low employment and high food inflation is the worst possible scenario for our country, for the ordinary people of our country, and for any emerging market to attract investments. Fiscal deficit averaged 4.63% under our UPA government. It's averaging 5.13% under the NDA. I'm not going to go into details about that because fiscal deficit is not at the moment our biggest concern. But since the Finance Minister talked about it and FDI inflows doubling and so on by comparison with UPA, I just want to say it's a blatantly misleading assertion because FDI inflow as a ratio of GDP peaked in 2007-8 at around 3.6% and has never regained that level. Net FDI to GDP ratio today is only 1%. And the fact is that hardly any greenfield investment money has come in.
RBI estimates that foreign investment today stands at $42 billion in 22-23, which is about the same as in 2008, 2009, 15 years ago under UPA. Over those 15 years, foreign investment has come down in terms of a percentage of GDP, whereas Vietnam, for example, has close to 4.5% of GDP in their example. And gross FDI into India in the first half of the current financial year, April to September, was just $10 billion. The last time it was lower than this was in the first half of 2007-2008, sir. And the Finance Minister hasn't given us any cost-benefit analysis of the production-linked incentive scheme for which so much money has been spent. Where is the employment generation happening, Madam Minister? There is an absolute need for mid-course corrections, and she will have to answer this question. Internally, meanwhile, sir, our states are in turmoil because transfers to states have been reduced substantially. We know right now in Jantar Mantar there's a protest going on with many states protesting the way in which amounts have not been transferred. The current allocation of 3,67,000 crores in budget 22-23 already sees a gap of almost 6,000 crores in the revised estimates, and there's been a further decrease in the coming budget to 3,59,000 crores. Devolution of tax revenues is a problem because the states have only been getting 30 to 33% in the last 5 years, a far cry from the 15th Finance Commission's recommendation of 41% and a reduction from the 42% given by the 14th Finance Commission. And the fact is the share of cesses and surcharges, which the government doesn't need to share with the states, keeps going up. It's now, it was 8.16% of gross tax revenue under our peak, but under this government, the number has tripled to 28.08% of gross tax revenue in the last fiscal year. So I just want to say there's a rising trend in capex, and we all have applauded that in the past, but the fact is the government seems to believe in trickle-down economics. Spend money at the top, somebody will benefit down below. We believe in trickle-up, sir. That is, if our economy produces the things that people wish to consume at affordable prices, the Aam Aadmi will not only live better, but will become a full participant in the economy. Our objective should be to make ordinary people into consumers and stakeholders in India's economic prosperity, but our government does not see them at all in just focusing on capex. Finally, sir, the Finance Minister reserving an amount of 11,111,111 crores for capital expenditure shows there's nothing particularly scientific about the calculations in her budget. A minister who chooses a lucky number is heading an economy that needs all the luck it can get, sir. There is no question that when she says that GDP stands for governance, development and performance, GDP, as I've pointed out through my speech, the fact is it's not equitably enhancing the capabilities of the ordinary people of this country. Instead, G stands for government intrusion and tax terrorism, D stands for demographic betrayal, and P stands for poverty continuing. This actual GDP also jettisons the trinity of demography, democracy, and diversity the government claims to be serving. The demographic dividend is on the cusp of becoming a demographic disaster with the unemployment crisis, the K-shaped growth, and the ever-widening schism between the rich and the poor. Democracy is suffering through this government's arrogant contempt for institutions, a government that suspended 146 MPs rather than be held accountable for a security breach, that bulldozes laws as per its own whims and fancies with no regard for parliamentary procedure, that requires a no-confidence motion to be moved before its leaders are willing to speak on vital issues, including Manipur, should ideally refrain from claiming to be the messiah of democracy, let alone its mother. And when it comes to diversity, we know the record hasn't been great either, with increasing attacks on religious minorities, the ruthless dispensing of bulldozer justice, mob lynching, communal violence, and worse, combined with the disregard for states and their operations through a skewed and centralizing cooperative federalism, under which the states are meant to cooperate, but the centre operates as it pleases. The government has failed gravely on all the counts where it pats its own back. Thank you. Therefore, sir, I'm concluding, this House must realize the game of smoke and mirrors that the government is playing with interim budget, with nearly no redressal of the real crises plaguing our economy and affecting the Aam Aadmi. It is high time that this election gives others an opportunity to show up their shallow rhetoric for what it is, which is all talk and no action. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I should thank you, Dr. Tharoor. It is not only your eloquence, but your content
for which we have been awarded yesterday in a very beautiful function. Now I request Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस देश के प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनावी साल में भी अपने आप को कंट्रोल करके देश की एक कैसी दशा होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए और उस नीति को संपादित करने के लिए किस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस बजट को लेकर आए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन दोनों को बधाई देता हूं। सर बशीर बद्र ने एक बड़ी अच्छी शायरी कही कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका फोकस लिमिटेड है सर। लिमिटेड क्या है कि एक तरफ वो जन्मदाता को देख रहे हैं और एक तरफ वो अन्नदाता को देख रहे हैं। जो जन्म देने वाली मां है उसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए और जो हम लोगों को भोजन देने वाला किसान है, अन्नदाता है, उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ वो भविष्य निर्माता को देख रहे हैं जो हमारा यूथ है, जिसपे कि पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है, और एक तरफ करदाता हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। सर मैं अभी कांग्रेस के अपने सदस्य को सुन रहा था। इस देश में हुआ क्या सर, काफी यहां वो आपने ये कर दिया, आपकी पॉलिसी कॉर्पोरेट है, आप गरीबों के लिए नहीं देखते, क्योंकि उनके पास दो कहावत है सर कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, और दूसरा एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये 75-77 साल की जो ये देश की जर्नी है सर, उसमें तो 10 साल ही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं ना। 57 साल 60 साल आप यदि कहते हैं कि गरीबी नीचे गई, गरीब नीचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, तो कभी आपने देखा है अपने तरफ कि इन सारे पॉलिसी के प्रति जिम्मेवार कौन है? यह देश कहां से आगे बढ़ा सर? आप यह समझें कि जब यह देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्या पॉलिसी बनाई कांग्रेस ने? लाइसेंस परमिट कोटा राज। 1947 से लेके मोर और लेस 1990 तक सर इस देश ने लाइसेंस परमिट कोटा राज देखा। जो कांग्रेस के समर्थक लोग बिजनेसमैन थे, वही कार बना सकते थे, वही स्कूटर बना सकते थे। बिरला जी कार बनाएंगे, बजाज जी स्कूटर बनाएंगे, कोई जी सीमेंट बनाएंगे, कोई जी अखबार चलाएंगे। कभी आपने देश के अन्य लोगों के बारे में सोचा? यह देश लाइसेंस परमिट कोटा राज के बाद 2004 से लेकर 2014 तक, संजोग से उस बीच में मुझे भी संसद बनने का जो है मौका मिल गया, एक लूट राज में चला गया सर। एक तरफ 1947 से लेकर 1990 तक लाइसेंस परमिट कोटा राज, और 2004 से लेकर 2014 तक लूट राज। 2G, 4G, कोल जी, भाई जी, जीजा जी, जो भी है सर, लूट राज। आज क्या है सर? 2014 के बाद से 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं स्थापित हुआ, इस देश में राम राज्य स्थापित हुआ। यह परिवर्तन है सर। और इस परिवर्तन की मानसिकता क्या है सर? लगातार आज एक पेज का एड जो है सभी अखबारों में भरा पड़ा। कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने चलते चलते उसका रेफरेंस दिया सर, क्योंकि उनको सुनने की कैपेसिटी नहीं है सर। आज एक पेज का कि साउथ का और नॉर्थ का डिवाइड। मैं इसको बड़े, चूंकि इन चीजों को मैंने भोगा है सर, अंग्रेजों को जब यह लग गया सर कि इस देश पर वो बहुत दिन तक राज शासन नहीं कर सकता है, तो उसको दो राज्य ऐसे नजर आए
जिसको कि उसने विभाजित करने का फैसला किया और अलग देश बन गया। आपको पता है कि बंगाल का और पंजाब का डिवीजन हुआ। चूंकि बंगाल, सभापति महोदय, जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस राज्य से आप आते हैं, हम और आप एक ही थे, हम लोग बंगाल के पार्ट थे। बंगाल इस देश में कंट्रीब्यूट करता था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के पहले राजमहल में जो है आइसक्रीम की फैक्ट्री थी 16वीं शताब्दी में। हम लोग इतने विकसित थे, ढाका का मलमल था। पंजाब जो है पूरा का पूरा दुनिया को खिला रहा था। हमारे यहां उद्योग थे, धंधे थे, चाइना मिट्टी के थे, लेकिन उसने पार्टीशन कर दिया। आज एक देश बांग्लादेश बन गया, एक देश पाकिस्तान बन गया। इनको इतिहास नहीं पता है सर। ये कभी द्रविडियन के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है सर, सब उसका सम्मान करते। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, किसको समस्या है सर? लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, इस देश को नहीं समझने के कारण, आज भी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, क्योंकि मंदिर केवल कश्मीर में नहीं है, मंदिर तमिलनाडु में भी है, मंदिर कर्नाटक में भी, मंदिर केरल में भी है। किस भाषा में लोग पूजा कराते हैं सर? जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो पंडित आपको संस्कृत में ही श्लोक का उच्चारण करते हुए पूजा कराता है। यह देश है सर। इस देश में न कोई द्रविड़ है, न कोई आर्यन है, न कोई तमिल है, न कोई नॉर्थ है, कोई साउथ है। यह देश एक है। चोला डायनेस्टी जब थी सर, उस चोला डायनेस्टी ने केवल यहीं नहीं, आज जिस मालदीव की चर्चा होती है, लक्षद्वीप की चर्चा होती है, सिंगापुर की चर्चा होती है, कंबोडिया की, थाईलैंड की, वियतनाम की, कहीं की भी चर्चा हो सर, चोला डायनेस्टी ने भारत के सनातन कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाया। चोला डायनेस्टी साउथ की थी सर, उसने पैसा एजुकेशन पर खर्चा किया। अब नो कर रहे सर, उन्हीं के तमिलनाडु में चोला जो है डायनेस्टी 8वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक चल गई। 600 साल तक उन्होंने शासन किया सर। वो पल्लव वंश की बात नहीं करेंगे, वो चालुक्य वंश की बात नहीं करेंगे, वो चोला वंश की बात नहीं करेंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि इन्होंने देश की इंटीग्रिटी के लिए काम किया। आज आप बात करते हैं नॉर्थ और साउथ डिवाइड की। मैं अभी डाटा मंगा के पढ़ रहा था सर, जितना पैसा उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला 15th फाइनेंस कमीशन के डेवल्यूशन के कारण, उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा तमिलनाडु को मिला, केरल को मिला, आंध्रा को मिला, तेलंगाना को मिला सर। कहां चले गए आप? आज का प्रश्न है सर, आज का प्रश्न है 600 बिलियन एफडीआई आया 2014 से लेके 2023-24 तक। वो एफडीआई देश के लिए आता है। साउथ की यदि समस्या, यदि नॉर्थ इंडिया के लोग, ईस्ट इंडिया के लोग मानने लगे सर, इस तरह से ये देश चलेगा? हम गरीब हैं सर, हम निर्धन हैं, हमारे लोग उनके यहां रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। पूरे देश को पता है कि 80-85% से ज्यादा माइंस झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है। क्या हमने कहा कि हम अमीर हैं? क्या हमने कहा कि साउथ इंडिया का विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला कि हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो, हम देश तोड़ देंगे? ये कौन सा आपदा में अवसर आप ढूंढने की बात करते हो? किस कांग्रेस मेंटलिटी की बात करते हो? कोयला हमारे पास है, यूरेनियम हमारे पास है, बॉक्साइट हमारे पास है, क्या चीज हमारे पास नहीं है? सोना हमारे पास है, अबरक हमारे पास है, लेकिन आज हम गरीब हैं। हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंबई के लोग अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं सर, उनका विकास हो। कहां का पैसा है? टाटा यदि टैक्स दे रहा है सर, किसका पैसा दे रहा है? यदि जमशेदपुर नहीं होता, झारखंड नहीं होता, टाटा नहीं होता। यदि पलामू नहीं होता, यदि एल्युमिनियम की फैक्ट्री जो है रांची की नहीं होती, मुरी की फैक्ट्री यदि नहीं होती सर, बिरला नहीं होता। आप हमारा कोयला ले जाके आंध्रा में पावर प्लांट लगाते हो, हमने कभी कहा? तमिलनाडु में पावर प्लांट लगाते हो, कभी कहा? इसीलिए नहीं कहा कि यह देश एक यूनाइटेड देश है। इस देश में गरीबों का विकास, पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, नॉर्थ का विकास, साउथ का विकास, उत्तर का विकास, पूरब का विकास होगा।
आज आप समझिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी के कारण मैक्सिमम स्कूल, कॉलेज और अस्पताल साउथ इंडिया में बने सर। कोलकाता पोर्ट के खत्म हो जाने के बाद पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश पोर्ट के खत्म होने के बाद, क्योंकि आपके पास समुद्री प्रभाव है, जिसके कारण लोग, मैं ये कह रहा था सर, आज का प्रश्न है कि 600 बिलियन की एफडीआई आई। आपको आश्चर्य होगा सर कि उस 600 बिलियन की एफडीआई में, उस 600 बिलियन की एफडीआई में 450 बिलियन की एफडीआई या तो केरल गई, या तमिलनाडु गई, या वो कर्नाटक गई, या वो आंध्रा गई, वो तेलंगाना गई, वो महाराष्ट्र गई, वो गुजरात गई। इसी 7 स्टेट में गए सर। वो एफडीआई भारत सरकार के कारण नहीं गया, भारत सरकार के नीतियों के कारण नहीं गया, मोदी जी की मजबूती के कारण नहीं गया, वित्त मंत्री की पॉलिसी के कारण नहीं गया। आज आपके यहां सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हमारे कारण नहीं गया। यदि आज आपके बच्चे, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो मैक्सिमम बच्चों को निकालती है तो भारत सरकार निकालती है सर। महीने का धब्बा आसान करती है। क्या उस वक्त नॉर्थ और साउथ देखते हैं? आज इजराइल के युद्ध में मैक्सिमम साउथ इंडियन, यदि केरल में, मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या बात करते हो? ये देश और जो है एक यूनाइटेड पॉलिसी से चलता है सर। आज आप किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? क्या बंगाल की तरह, जिस तरह बंगाल का डिवीजन करके बांग्लादेश बन गया, क्या पंजाब का डिवीजन करके जिस तरह पाकिस्तान बन गया, आप ये नॉर्थ और साउथ का, यदि आप वोट नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को सर, जनता यदि साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में मुस्लिम लीग का और पंजाब में जो है जिन्ना की पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था और कांग्रेस को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण देश को बांटना था, तो क्या आप वोट नहीं मिलने के कारण नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करोगे? क्या इसी तरह से देश चलाओगे? स्मॉल करेक्शन, पंजाब में जिन्ना की पार्टी को वोट नहीं मिल रहा था, उनका बढ़ोत नहीं हो रहा था, दूसरी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसकी बढ़ोत हो रहा था उस समय। थैंक यू सर। सर मिस्टर राजा, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। जब उनका समय आएगा वो बोलेंगे सर। निशिकांत जी, जब वो समय आएगा तो बोलेंगे सर, आई एम नॉट यील्डिंग। निशिकांत जी, दूसरा सर, आप बोलिए। दूसरा सर, आप ये समझें, निशिकांत जी, सभापति महोदय, कांग्रेस ने अपनी पार्टी की बर्बादी के साथ, इस बर्बादी के साथ एक झूठ के जुमले का जो है काम स्टार्ट कर दिया सर। अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भी सर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जो है बहुत चर्चा हुई सर। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है ये नमूना है सर कि किस तरह ये बहकावे में आकर देश को गुमराह कर रहे हैं कि 111 नंबर पर हम आ गए। हमने देखा सर कि कौन कौन सी नीतियों के कारण और किस आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना। आश्चर्य होगा उदासी साहब आपको कि जो कॉलम वर्ल्ड पोल हुआ भारत में, 140 करोड़ का देश है, यह देश को जानने वाला सवाल है सर। 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों को, केवल ध्यान दीजिएगा, केवल 3000 लोगों के ऊपर पोल करके यह फैसला कर लिया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर पर आ गए। यह सैंपल साइज है सर 140 करोड़ में। जो उन्होंने डाटा लिया सर वो और भी अच्छा है सर। जैसे अभी शशि थरूर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एनएसएसओ का जो है सर्वे नहीं हुआ है, जनसंख्या का सर्वे नहीं हुआ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया सर। 2011 का यूपीए के सरकार के समय का जो है ये डाटा लेके सभापति महोदय 2011 का वो लोगों को, और उसमें भी सर्वे साइज कितना है, 1 लाख आदमी का। 2011 में जो उन्होंने डाटा लिया वो 1 लाख आदमी का डाटा लिया सर। इसके बाद जो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात कही सर, वो डाटा उनका 2012 का है। 3000 लोगों को फोन कॉल करते हैं, 2011 का डाटा ले लेते हैं 1 लाख लोगों का, और एग्रीकल्चर में जो है 2012 का एक डाटा ले लेते हैं। अरे राम राज्य तो 2014 के बाद आया है,
2014 के बाद यदि आप कहते तो बात समझ में आती। देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? और यदि उन्हीं के आधार पर तय किया जाए तो आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बड़े अथॉरिटी के साथ मैं बोलता हूं कि भारत 48 नंबर पर है। इसके लिए माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं। उनके कारण जो है इस देश में गरीबी घटी। सर, इस बजट की, अभी तक तो मैं बाकावे में था, इस बजट की कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं। सर, सभापति महोदय, इस बजट में एक बड़ी अच्छी बात है जिसमें कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जनसंख्या और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए, पॉपुलेशन के लिए और डेमोग्राफिक चेंज के लिए। मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य में मैं 2009 से चिल्ला रहा हूं कि हमारी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल रही। हमारे जो जिले हैं उसमें एक समुदाय विशेष का जनसंख्या बढ़ रहा है। यह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? मैं अभी यात्रा को देख रहा था, काफी यात्रा को, कि एक कमेटी बनी है पॉपुलेशन पर, डेमोग्राफी पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तीसरा टर्म आएगा 370 हमारी केवल सीटें होंगी और 400 से ऊपर जब एनडीए पार होगा तो हम बड़े बड़े चीजें करेंगे। तो मुझे लगा कि क्या बड़ी चीजें हो सकती है और क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी सर? हमारी क्या नीति है और यूपीए की क्या नीति है? हमने 2 बड़े यात्रा की। इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े यात्रा किए सर। एक यात्रा हुआ और दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी जिसमें सहभागी रहे, जिसमें प्रभावी रहे और जिन्होंने संकल्प से उस यात्रा को सिद्धि तक पहुंचाया। वो 2 यात्रा क्या थी? एक यात्रा थी सोमनाथ से लेके अयोध्या तक। हमने कहा कि पुनर्जागरण होने की आवश्यकता है, जैसे सोमनाथ बना वैसे ही हम अयोध्या बनाएंगे। एक संकल्प था जिसको कि हमने सिद्धि में पहुंचाया और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। दूसरी यात्रा थी हमारी कन्याकुमारी से कश्मीर, और हमने ये बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर एक है, कश्मीर में धारा 370 है, 35A है। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम 370 खत्म करेंगे और दोनों संकल्प को हमने सिद्धि तक पहुंचाया। यह हमारी यात्रा का उद्देश्य था। इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? आपदा में अवसर ढूंढना सर। आपदा कहीं है तो उसको अवसर में कैसे तब्दील करो। मैं जनसंख्या पर, डेमोग्राफी पर बात कर रहा हूं जो इस बजट का पार्ट है। ध्यान से सुनिए। कोरोना में यदि आपदा आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें अवसर ढूंढा। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचेंगे, कैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे जो 70 साल में आपने नहीं किए। देश को आत्मनिर्भर बनाया। इन्होंने क्या किया? ये मणिपुर से शुरू करते हैं। पूरे देश को यह पता है सर, मणिपुर के हालात बहुत ही खराब हैं। इसके बावजूद भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है इस कांग्रेस की, इसने आपदा में अवसर ढूंढा और मणिपुर से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और कहां गया? गौरव गोगोई बहुत चिल्ला रहे हैं। आपने यात्रा का रूट क्या बनाया? आपने बरपेटा भेजा, नौगांव भेजा, धुबरी भेजा, हमारे यहां मालदा आया, मुर्शिदाबाद आया, किशनगंज आया, कटिहार आया, पूर्णिया आया, अररिया आया, किशनगंज आया, पाकुड़ आया, साहबगंज आया, गोड्डा आया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है सर। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है। ये बांग्लादेशी मुस्लिम वोट के लिए, इसी के लिए ये कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी सर, कि जनसंख्या को नियंत्रित ही नहीं करना है। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सारे जिले ऐसे हैं सर, एक मंदिर में नहीं गए। उन्होंने भूपेन हजारिका के यहां जाने का तोहमत नहीं उठाया। उन्होंने लाचित जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उसके यहां नहीं गए। बंगाल में शंकरदेव के यहां नहीं गए। हमारे यहां बिरसा मुंडा के यहां नहीं गए। लेकिन ये कहां गए? ये बांग्लादेशी मुसलमान कैसे बढ़ेंगे, डेमोग्राफी कैसे होगी और कांग्रेस इस देश को कैसे तोड़ेगी, उसी यात्रा का ये उद्देश्य लेकर गए सर। और इनका मानसिकता क्या है सर? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी कविता है सर, कि
पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। कल का क्या है वीडियो सर? कल का वीडियो इस देश को सोचने समझने और देखने का बात है और कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। इस गांव में, हमारे गांव में, झारखंड के गांव में लोग जो है आज भी इतने गरीबी में जीते हैं कि वो अपने परिवार को यदि पालन पोषण कर लें तो बहुत है सर, कुत्ता नहीं पालते। कुत्ता को बिस्किट देते देते राहुल गांधी ने एक आदमी को कुत्ता वाला बिस्कुट दे दिया सर। क्या यही देश है? क्या यही यात्रा है? ये कल का वीडियो जो है फॉलोअर है सर? क्या यही देश है सर? और इसी कारण से मैंने सर, मैं आपको बताऊं, इस देश में कुत्ते का बड़ा खेल है सर। मैंने एक फिल्म देखी थी, मैंने एक फिल्म देखी थी सभापति महोदय, तेरी मेहरबानियां। तेरी मेहरबानियां में सभापति महोदय, वो जैकी श्रॉफ की बड़ी फेमस फिल्म थी सर, कि उसमें जो है कुत्ता अपने मालिक के लिए मर जाता है। यहां उल्टा है सर, मालिक, यहां तो पीडी के कारण हेमंत बिस्व शर्मा बाहर निकल गए सर, हेनरी के कारण एक महिला सांसद यहां से चली गई सर, और अब नूरी का इतना प्रभाव है सर कि कुत्ता का भोजन जो है आम आदमी को दे रहे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या डेमोग्राफी के लिए एक बड़ी अच्छी कमेटी जो है भारत सरकार लेकर आई है, हम उसका धन्यवाद देते हैं सर। दूसरा सर, मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि एक कितने मेंबर हैं इनके? सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा लाइन है सर, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ अब संकट बार। और सर बोलिए सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। 353 सर, मैं करना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डू इट बिकॉज 353 says no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person. आदरणीय अभी जो उन्होंने राहुल गांधी जी के नहीं सुनिए, बोला सर, बोलने दीजिए सर, जो उन्होंने मानहानि कारक नहीं है, जो उन्होंने बोला है सर, वो पूरा गलत है, तथ्यजनक है, और हमको ये भी पूछना चाहिए कि गलत हो सकता है पर मानहानि कारक बुलाते हैं, ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं, वो छवि भी पूरे देश ने देखी है। तो देश को निशिकांत जी सर प्लीज सर, मैंने जो वीडियो देखा है, मैंने अपना डिसीजन दे चुके हैं। आप बोलिए, बजट पे बोलिए। बजट पर ही बोलते हैं सर। बजट का जो दूसरा विषय है सर, बिस्किट खत्म हो गया, कि 11 लाख, जिसके ऊपर की शशि थरूर जी का बड़ा टेंशन था सर, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ से ऊपर जो है भारत सरकार ने बजट पे रखा है। और उसमें 2-3 समस्याएं हैं सर, कि जब इनकी सरकार थी, और मैं आईबी की बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट लेकर आया हूं सर, कि 2014 और 2024 में क्या फर्क आया। आपको पता है सर कि लगभग हजारों एनजीओ ऐसे हैं, नहीं ये आईबी की रिपोर्ट है सर, आईबी की रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन में सर, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूं। नहीं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, गूगल पर ये गूगल पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, ये गूगल पर मौजूद है सर। आप ये समझे पब्लिक डोमेन में सर, मैं कोई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं आया। 2014 की रिपोर्ट है, इनकी सरकार थी सर। उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी ने एक बड़ा रोता हुआ जो है एक रिपोर्ट दिया सर, कि इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां जितने एफसीआरए लाइसेंस धारक, उनसे बड़ा प्यार है सर। इनको प्यार होने के कारण भी है कि न्यूज क्लिक वाला अरेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ा कैंपेन कर देते हैं, क्योंकि चाइना का पैसा क्यों आ रहा है, चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना एग्रीमेंट साइन कर लेती है सर, इनका है। जब यहां भारत में जो है डोकलाम में और कहां पूरा चिल्लाते रहते हैं, जब पूरा हंगामा चल रहा है चाइना के साथ, भूटान में जब वो घुस जाते हैं तो उनके राजदूत के साथ जो है इनके नेता को, नाम नहीं बोलूंगा सर नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए सर युवराज को जो है परेशानी होती है,
तो वो चाइना के जो है एम्बेसडर के साथ मिल लेते हैं। तो इनकी जो सोच समझ है सर कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ ये खड़े हुए नजर आते। लेकिन आपको ये लगेगा सर कि दो रिपोर्ट है, एक एमके नारायण की रिपोर्ट है जो उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स के बारे में कहा कि किस तरह से जो अपना स्टॉक मार्केट में जो चीजें आ रही हैं उसमें से उनको लगता है कि टेरर का पैसा। और दूसरा ये आईबी की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी एफसीआरए लाइसेंस था सर, इनकी और भी एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस है, तो उसमें इनको बड़ा समस्या होता है एफसीआरए को खत्म करने के लिए। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी परसों जिक्र कर रहे थे, उसके ही 2-4 लोग जो है एफसीआरए लाइसेंस, चाहे हर्ष मांदर हो चाहे रुना राय हो, जिनको कि उन्होंने एनएसी का मेंबर बना था, एनएसी के मेंबर बने थे। मैं ऑन रिकॉर्ड, यदि भारत सरकार के आप पदाधिकारी रहिएगा तो उसके बारे में कहूंगा। ये सारे लोग जो है देश में जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विकास होना होता है वहां ये आंदोलन करते। इस कारण से कोल के खिलाफ हमारे यहां आंदोलन है, उस कारण से न्यूक्लियर के खिलाफ आंदोलन है, उसके कारण से लोगों को पीने का पानी और डैम के खिलाफ आंदोलन है, उसके खिलाफ रोड बनाने का आंदोलन है, उसके खिलाफ फैक्ट्री बनाने का आंदोलन है। यह पूरी आईबी की रिपोर्ट में कहा गया सर। और इनका क्या काम था? उस सारे रिपोर्ट पर सो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि ये जितने सो कॉल्ड एनजीओ हैं जो दुनिया में दूसरे देश से, आप ये समझिए कि मेरे यहां लोग मरे या जिए, इस कोरोना के बाद ये पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, दुनिया को समझने की आवश्यकता है सभापति महोदय। जब कोरोना में पूरी दुनिया मर रही थी, हम भी मर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। कोई हमारे नागरिक को या हम उसके नागरिक को लेने को तैयार नहीं थे। उनको लगा कि देश बचेगा, देश के नागरिक बचेंगे तभी हम बचेंगे। आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वो वीजा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अमेरिका का फंडेड पैसा आ रहा है और हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहा है। आप मेधा पाटकर को इतना दिन तक बचाए रखे, बढ़ाए रखे, उसके कारण न गुजरात के लोगों को पानी मिल रहा था, न राजस्थान के लोगों को पानी मिल रहा था, न मध्य प्रदेश के लोगों को पानी मिल रहा था। हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फैसला किया कि इंटरलिंकिंग को रिवर करना है, क्योंकि कई एक जगह ऐसा होता है कि बाढ़ हो जाता है, कई एक जगह सुखाड़ हो जाता है, और यदि दोनों नदियों को यदि हम जोड़ देंगे तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या से खत्म हो जाएंगे। आप ही के युवराज ने 2004 से लेकर 2014 तक कहा कि यह पॉलिसी गलत है। आपके उस वक्त के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा, जयराम रमेश ने, और उसी ग्रीन पीस मूवमेंट के आधार पर कहा, जिसको कि डच सरकार पैसा दे रही थी, जिसको यूरोपियन सरकार पैसा दे रही थी। ये सारी इस रिपोर्ट में जिक्र है। आपने इस देश को बेचने का काम किया है। और आज हम जब 11 लाख करोड़ की योजना लेकर आ रहे हैं, लोगों को गरीबी से निकालने की बात कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया पीएम गति शक्ति में देने की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एमपी यहां मौजूद नहीं है जिसको कि 4 लेन का नेशनल हाईवे नहीं मिले। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की प्रधानमंत्री आवास नहीं गया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां की हर घर जल नल की काम नहीं चल रहा है। कोई ऐसा एमपी नहीं है जिसके लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला। यदि हम गरीबों की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही चलता रहेगा, चीजें ऐसे चलती रहेगी। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सर, कांग्रेस ने जो झारखंड में ये यात्रा निकाली है, उस यात्रा में जितना पैसा खर्चा हुआ, कांग्रेस के एमपी के यहां 352 करोड़ रुपया पकड़ाया, उसी पैसे से ये यात्रा निकाली गई, क्योंकि वो उसका सांसद है। यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो उसका जवाब दे। आज यदि रेड हो रहा है सर, ये कह रहे हैं कि पूरा जो है सीबीआई आ रही है, ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। क्यों नहीं आएगा सर? पैसा आ रहा है। आप ये देखें कि यदि मैं 2023-24 का जानने का बात है, 2023-24 में अभी 9 महीना ही हुआ सर, 1500 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया और लगभग 1000 करोड़ का जेवर पकड़ाया। पैसा आप रख लीजिए, पैसा पकड़ा है। कोई ऐसा आदमी है जिसका बंगाल के यहां, बंगाल में रेड हुआ, कैश नहीं पकड़ाया? झारखंड में कांग्रेस के एमपी के यहां नहीं पकड़ाया, छत्तीसगढ़ में नहीं पकड़ाया, तेलंगाना में नहीं पकड़ाया, कर्नाटक में नहीं पकड़ाया। कर्नाटक में तो चुनाव के समय में मौजूद था।
और आप कहेंगे कि उस विकास के लिए भी हम पैसा लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आ जाएगा। ये नहीं चलेगा, न खाएंगे न खाने देंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। भ्रष्टाचार से हम लड़ेंगे जब तक भ्रष्टाचारी को जेल नहीं भेज देंगे। अभी आपने देखा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, और आप मान के चलिए कि जिंदगी में चुनाव लड़ने काबिल नहीं होगा। इस देश में इलेक्शन कमीशन में जो आदमी हलफनामा में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताए, 105 प्रॉपर्टी है। मेरा केस है लोकपाल के यहां, और सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहा है 105 प्रॉपर्टी न इलेक्शन कमीशन को कहा है सर, न इनकम टैक्स को कहा है। यदि आप चुनाव लड़ने जाते हैं, हम आप सभी चुनाव लड़ने जाते हैं सभापति महोदय, सर मेरे ऊपर 42 केस है। मेरे ऊपर, मेरे मां के ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मैं सारे केस लड़कर आया हूं। आपकी तरह मुख्यमंत्री की तरह भगौड़ा नहीं था जो भाग गया। मैं सारे केस को लड़ रहा हूं, और ये 105 आप भ्रष्टाचारी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। सभापति महोदय, यह पहला उदाहरण नहीं है झारखंड और बिहार में कि कोई मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद जेल गया सर। आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आदरणीय मधु कौड़ा जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। ये राजा साहब और कनीमोजी जी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी सर। आज उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? मनमोहन सिंह जी माफी मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूं माफी मांग कि आपको बरी कर दिया कोर्ट में, लेकिन आपको मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी ने जेल भेजा। राजा जी आपके करुणानिधि को भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल भेजा, हमने नहीं भेजा। हम तो आपके साथ हैं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन वो कांग्रेस को देखो, आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। सर इस बजट में दो और महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात जो है छोटी छोटी बात करके जो है, मैंने बहुत समय ले लिया सर। दो बहुत बात है। एक बात है सर कि अध्यात्म से पर्यटन तक ये देश जो है वो सनातन देश है सर, और सनातन देश ये है। 35 मिनट्स हो गए, बस 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। केवल दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये देश महत्वपूर्ण है सर। इस देश में अध्यात्म एक बड़ी ताकत है। आज भी लोगों को रोजगार देने का साधन हमारे यहां जो रिलीजियस टूरिज्म है, यही सबसे महत्वपूर्ण है सर। लोग मेले में जाते थे, आपको ध्यान हो कि उस वक्त कॉलरा हो जाता था, लेकिन बरसों वर्षों तक इस भारत सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व में मुस्लिम अपीजमेंट के अलावा कभी भी इस देश के जनमानस को टटोलने की या उनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। आज इस बजट में चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हो, चाहे बनारस में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर बना हो, चाहे इस सरकार ने 29 और सिटीज को डेवलप करने का सवाल किया हो, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सर, पूरे देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को रोजगार दे रहा है। ये दशा और दिशा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है सर जिसको कि भगवान के आगे सर नवाने में, झुकने में जो है बहुत फक्र महसूस होता है। एक उसके युवराज हैं, हमारे यहाँ मंदिर में गए सर, वो पटक पटक के जैसे लगता था कि वो पूरा का पूरा चौकी है सर। देवघर मंदिर में पूजा करते हुए देख लेंगे तो मुझे ही शर्म आता है कि क्यों गए। हमको तो भगवान का 2 मिनट का दर्शन हो जाता है तो लगता है कि जीवन धन्य हो गया। यह परिवर्तन है सर सोच का। आप सेकुलरिज्म करते रहिए, मुस्लिम अपीजमेंट करते रहिए। इस देश के लोगों को अध्यात्म में रुचि है और वो पर्यटन जो है आगे बढ़ाता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना हो रही है।
अंतिम पॉइंट सर, अंतिम पॉइंट यह है कि इस बजट में एक अंतिम लास्ट, आपको अंग्रेजी आती है, हमको हिंदी आती है, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, क्या करिएगा, यही फर्क है। आप तमिल में बोलते अच्छा लगता, तेलुगु में बोलते अच्छा लगता, कन्नड़, मराठी, मलयालम में बोलते अच्छा लगता। किसने आपको अंग्रेजी सिखा दिया? अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। आप देखें कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन के लोग यदि जाते हैं पेरिस तो वो जो है फ्रेंच ही बोलते हैं, वो दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं, जर्मन ही बोलते हैं लोग। अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप तमिलियन है, तमिल भाषा बोलिए, अंग्रेजी बोलकर आप तमिल हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन कर लूंगा मैं। दूसरा सवाल है सर, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड है। देश के बारे में नहीं पता है, अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, कल्चर के बारे में नहीं पता है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता है, मंदिर की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है। अंतिम सवाल सर, अंतिम जो चीज है सर कि मध्यम वर्ग, सबसे यदि लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो अपने किराए के मकान में रहते, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते, चौल में रहते, बंबई के कई एक जगह चौल में रहते। और इसके बारे में, गरीबों के बारे में सोचा हमने कि 3 करोड़ से 5 करोड़ आवास हो जाएगा, शहरी के लिए हो जाएगा, ग्रामीण के लिए हो जाएगा, जल जीवन मिशन हो जाएगा। लेकिन किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए जो कि अपना जीवन शहर में चौल में बिता रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में बिता रहे हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं और जीवन भर वो किराए के मकान में रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चों की भी शादी नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि इसको रहने के लिए इतने वर्षों के बाद अपना मकान भी नहीं है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक बड़ा ही लैंडमार्क घोषणा किया है सर, जो बजट के बाद पूरा होगा। और वो जब पूरा हो जाएगा तो सभी लोगों को अपना मकान होगा, कोई किराए के मकान में नहीं होगा, कोई चौल में नहीं होगा, कोई झुग्गी में नहीं होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक काम जो हमेशा करते हैं, जो ये लोग कभी नहीं करते हैं, कि उनको कभी अहंकार नहीं है। ये लोग तो अपने आप को राजा मानते हैं, हमेशा अहंकार है। वो हमेशा विद्यार्थी की तरह रहते हैं सर। और विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है कि काक चेष्टा, बको ध्यानं, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। उनका काक की तरह चेष्टा है कि इस देश के गरीबों को जो है आगे करना है। बगुले की तरह ध्यान है कि उस योजना को कैसे पूरा करना है। कुत्ते की तरह उनकी नींद है, श्वान की तरह उनकी नींद है, जो किसी भी आहट को सबसे पहले आपदा को पहचानती है। उनका जो है अल्पाहारी, कम खाते हैं सर, और चूंकि घर परिवार नहीं है तो गृह त्यागी हैं। इस 5 लक्षण के कारण हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं और इस अवसर पर इस बजट को लेकर आए हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद निशिकांत जी। तिरुदयानिधि मारन சார், வணக்கம் சார். அவைத் தலைவர்களுக்கு முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இடைநிலை நிதி அறிக்கை ஒரு பெரிய கண் துடைப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. குறிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை மூலமாக எந்த பயனும் இல்லை. ஒரு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அது குறிப்பாக நடுத்தர மக்கள் ஏதாவது வரி சலுகைகள் தருவார்களா, இவர்கள் 1000 பேசுகிறார்களே, சத்தியங்களை வாரி வாரி வழங்குகிறார்களே, கண்டிப்பாக நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி வரும் என்றால் நாமம் தான் வந்து இந்த அரசாங்கத்தின் இடைநிலை அறிக்கையிலே செலவு எவ்வளவு தெரியுங்களா? 47,65,768 கோடி. 6% சென்ற ஆண்டை விட அதிகம். இதில் 25% வெறும் வட்டிக்கு செலவிடுகிறார்கள். அவர்கள் வாங்கிய கடனுக்கு திருப்பி தர வட்டிக்கு 25% அவர் தருகிறார்கள். வெறும் 40% அவர்கள் செலவினமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும் பார்த்தீங்கன்றால் வரைவு தீர்மானத்துக்கு ஒட்டிதான் இந்த பட்ஜெட்டே அமைந்திருக்கிறது. இது இந்த நிதிநிலை அறிக்கை பிரதான செலவுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து சமூக நலனுக்கு பின் தள்ளியுள்ளது. குறிப்பாக பார்த்தீர்கள் என்றால்
சமூக நல திட்டங்களுக்கு 7% இந்த மானியத்தை இந்த அரசு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. குறிப்பாக உணவு மானியம், எங்கே இவர்கள் உணவு ரேஷன் கடையிலே இலவசமாக அரிசி கோதுமை தருகிறேன் சொல்கிறார்களோ அந்த உணவு மானியத்திலே 3.3% குறைத்திருக்கிறார்கள். பிறகு விவசாயிகளை விடுவார்களா? விவசாயத்துக்கான உரம் மானியத்திலையும் 13.2% இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது. மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கு அத்தனையுமே இவர்கள் குறைத்துள்ளார்கள். ஆனால் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்ட மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை. நாங்கள் நினைத்தோம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர், தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர், நல்லவர், வல்லவர் என்று நாங்கள் நினைத்தோம். ஆனால் அவர் வாயிலிருந்து வருவதெல்லாம் உண்மைக்கு அற்ற செயல்கள் தான் இருக்கின்றது. குறிப்பாக பார்த்தினால் இந்த இடைக்கால நிதி அறிக்கை ஏழைகளுக்காக, இளைஞர்களுக்காக, மகளிருக்காக, விவசாயிகளுக்காக என்று சொன்னார்கள். பார்த்தீங்கன்றால் உண்மை நிலை என்ன? இங்கு பணக்காரர்கள், குறிப்பாக அம்பானி, அதானி, டாடா போன்றவர்கள் தான் மேலும் மேலும் பணக்காரராக ஆகியிருக்கிறார்கள். ஏழைகள் இன்னும் பரம ஏழைகளாக போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த அம்பானி, அதானி, டாடா நிறுவனம் போன்றவர்கள் 20% பணக்காரர்கள் தான் இந்தியாவின் 40% வருமானம் அவர்கள்தான் தான் இருக்கிறது. ஆனால் நடுத்தர மக்கள் இன்னும் ஏழையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் வருமானம் 20% குறைந்து கொள்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் சிலருக்கு வருமானமே இல்லாத நிலைமை வந்திருக்கிறது. இளைஞருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள். எங்கே வரும் திருப்பி ஆட்சி தந்தால் இளைஞர்கள் தருவார்களாம். ஐயா பிரதமர் அவர்களே, என்ன சொன்னீர்கள்? 2014ஆம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே, அது என்னாச்சு? 10 ஆண்டுகளாக வெறும் வாயில் வாடை சுட்டீர்களே, அதை தவிர வேற என்ன செய்தீர்கள்? இதுவரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு இல்லை இல்லை இல்லை. பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2016-17 11.88% குறைந்திருக்கிறது. 2021-22 7.96% குறைந்திருக்கிறது. இன்னும் இந்த பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. 2014 திரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பு ஆக்குவோம் என்றீர்கள். இரட்டிப்பு ஆனதா? இல்லையே. இன்றைய நிலை என்ன? பணவீக்கத்தால் விவசாயத்துறை, விவசாயிகள் நிலைமை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? அம்பானிகளுக்கும், அதானிகளுக்கும், டாடாஸுக்கும் வாராக்கடனை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். பணக்காரர்களான கடனை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள். ஆனால் விவசாயிகளின் கடனை இதுவரை நீங்கள் தள்ளுபடியே செய்யவில்லை. அதற்கு மாறாக விவசாயிகளுக்கு எதிரான விவசாய மசோதாக்களை கொண்டு வந்தீர்கள். ஆனால் இந்தியாவில் மக்கள் உறுதித்த குரலை எதிர்த்த பெண் அந்த மசோதாவை நீங்கள் பின்னுக்கு வாங்கி கொண்டீர்கள். முன்னு பார்த்தீர்கள், சில்லறை விற்பனை பணவீக்கம் இந்த 8 ஆண்டில் 7.8% உயர்ந்திருக்கிறது. மொத்த விலை பணவீக்கம் 9 ஆண்டில் 15.8% ஏறி இருக்கிறது. RBI சொல்கிறது 6% இது சில்லறை பணவீக்கம். ஆனால் நமது பணவீக்கம் 7.8 போயிட்டு. அது அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த 30 ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் பணவீக்கம் ஏறிக்கொண்டிருக்கு. இந்த நிலைமை என்ன? அதாவது சேமிப்புகளை, மக்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை அவர்கள் பொழுது கழித்து கொண்டு வருகிறார்கள். வேறு வழி இல்லை. எதுக்கெல்லாம் சேமித்து போயிருந்தார்களோ அத்தனையும் அவர்கள் என்று கொண்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக பார்த்தீர்கள், இந்த பாஜக அரசு வந்த நாள் முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு அரசாகவே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சென்ற ஆண்டு மிக்ஜாம் புயல் என்ற மிகப்பெரிய கொடூரமான புயலை நமது தமிழ்நாடு, குறிப்பாக சென்னை சந்தித்தது. எங்கள் மாண்புமிகு முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதமரை சந்தித்து, நேரடியாக சந்தித்து சுமார் 7033 கோடி கேட்டார். மிகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிரந்தர நிறைவாக ஒரு 12,650 கோடியை கேட்டார்கள். இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்தது என்ன? 0 தான். ஒரு நயா பைசா கூட ஒன்றிய அரசிலிருந்து வரவில்லை. இத்தனைக்கும் ராணுவத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வந்தார், பார்த்தார். ஏன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்தார்கள், பார்த்தார்கள், கையை சேர்த்தார்கள், வெறும் வாய்ப்பேச்சு பேசினார்கள், இன்டர்வியூ கொடுத்தார்கள், ₹1 தர வக்கில்லாமல் சென்று விட்டார்கள். எப்படின்னா, இதில் கொடுமை என்னென்றால்,
நாங்கள் கேட்டோம். என்ன கேட்டோம்? ஐயா, நாங்கள் உங்கள் காசை கேட்கவில்லை, எங்கள் வரிப்பணத்திலிருந்து கொடுங்கள் என்று எங்கள் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் கேட்டார். அவங்க உங்கள் வீட்டு காசை கேட்கவில்லை, உங்க அப்பா வீட்டு காசையும் கேட்கவில்லை, எங்கள் வரிப்பணத்தை தருகின்றார். அதற்கு நமது நிதியமைச்சர் ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைக்கிறார். ஒரு மணி நேரம் எங்களை வசைப்பாடினார். வசைப்பாடி என்ன சொன்னார்? திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும், உங்க அப்பா வீட்டு காசு உங்க ஆத்தா வீட்டு காசு எல்லாம் கேட்க கூடாது, மரியாதை இருக்கணும். ஆனா அவருக்கே தெரியவில்லை, பிரதமர் அவர்களே உங்க சாச்சா வீட்டு காசான்னு கேட்டாரு. அப்போ நிர்மலா சீதாராமனுக்கு அறிவுரை சொல்ல நேரம் இல்லையா? நான் கேட்கிறேன், நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே, உங்க ஆத்தா வீட்டு காசெல்லாம் சொல்றீங்களே, நான் திருப்பி கேட்டேன், உங்க தோப்புனார் வீட்டு காசை நான் கேட்டோம்னு கேட்டால் நல்லா இருக்குமா? இருக்காது இல்ல? அதேதான், உங்கள் பேச்சில் வன்மம் இருக்கிறது, நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் இந்த பாஜக அரசு வந்தவுடன் கடந்த 10 ஆண்டு சாதனை என்று சொல்கிறார்கள். டிமானிட்டைசேஷன், பண மதிப்பிழப்பு கொண்டு வந்தார்கள். எதுக்கு கொண்டு வந்தார்கள்? மோடி அவர்கள் சொன்னார்களே, பிரதமர் எனக்கு 3 மாதம் தாருங்கள், இந்தியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கருப்பு பணத்தை அத்தனையும் நான் கொண்டு வரேன் என்றால் என்ன கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்தார்கள்? புதிதாக 2000 ரூபாய் நோட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். ஐயா கேட்கிறேன், இங்கே 2000 ரூபாய் நோட்டு எங்கே? ஏன் அதை எடுத்தீர்கள்? அப்போது நீங்களே தவறு செய்தீர்கள் அர்த்தம். பிறகு மாபெரும் உலகத்தை அழித்த கோவிட் வந்தது. கோவிட்-19 எப்படி இந்தியாவுக்குள் வந்தது? அதன் முக்கிய பொறுப்பே பாஜக தான். என்ன, குஜராத் தேர்தலுக்காக நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்ற நிகழ்ச்சியை குஜராத்திலே நடத்தினார்கள். அதற்காக அனைத்து விமான நிலையங்களையும் திறந்து வைத்தார்கள். அதன் மூலம்தான் கோவிட் வந்தது. அதை நீங்கள் நடத்தாமல் இருந்தால் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை நீங்கள் காத்திருக்கலாமே. ஏன், இன்னும் மேலே சொல்கிறேனே, நீங்கள் இறப்பு மதிப்பை கூட தவறாக தான் குறைத்து காட்டினீர்கள். அதுவும் குறிப்பாக சொல்ற பணவீக்கத்தால் மக்கள் கஷ்டப்படும் போது, குறிப்பாக வெங்காய விலை ஏறிய போது இந்த அவையிலே நிதியமைச்சர் என்ன சொல்கிறார்? வெங்காயமா விலை ஏறிச்சா? நான் வெங்காயம் சாப்பிடுவதில்லை, அதனால எனக்கு பத்தி தெரியவில்லை. என்ன அகங்கார பேச்சு, போஷுவா பேச்சு, அதாவது ஏழைகள் கஷ்டத்தை தெரியாமல் பணக்காரர்கள் மட்டும் ஆதரிக்கின்ற பேச்சு தானே. பிறகு நாங்கள் கேட்டோம், இந்த கோவிடுக்கு பிறகு பெட்ரோல் விலையும் கேஸ் விலையும் ஏற்றிவிட்டீர்களே, பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டுவிட்டது, டீசல் விலை 100 ரூபாய் தொட்டுவிட்டது, கேஸ் விலை கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய்க்கு வந்தது. ரஷ்யாவில் நடக்கிற போரினால் அங்கு குறைந்த விலையிலே எண்ணெய் கிடைக்கிறது. அந்த எண்ணெயை யார் வாங்குகிறார்கள்? ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், அதானி நிறுவனம் வாங்கி இங்கே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரவில்லை, வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள். அதனால் கொள்ளை லாபம் அடித்தார்கள். அந்த லாபத்திலே நமக்கு விலையை கொடுத்திருக்கலாமே, நீங்கள் செய்யவே இல்லையே. ஆனால் என்ன செய்தார்கள் இந்த பாஜக அரசு? ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்கிலும் ஒவ்வொரு ரயில் நிலையிலும் பிரதமர் செல்ஃபி ஸ்டாண்டை வைத்தார்கள். அந்த செல்ஃபி ஸ்டாண்டுக்கு விலை எவ்வளவு தெரியுமா? 6 லட்சம் ரூபாய். எதற்கு? பிரதமருடன் நான் புகைப்படத்தை செல்ஃபி தேவையா? அந்த பணத்தை மக்களுக்கான பயனுள்ள வகையிலே நீங்கள் செலவழித்திருக்கலாமே, செய்யவில்லையே. அதனால் என்ன செய்வீர்கள்? இன்னும் சொல்ல போனால், நீங்கள் இப்பொழுது இந்தியாவிலே இடியை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்? காங்கிரஸ் கட்சி, குறிப்பாக மறைந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் எமர்ஜென்சியை தவறாக பயன்படுத்தினார், அது பெரிய குற்றம், அந்த குற்றத்தை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று சொன்னீர்கள். இன்று எமர்ஜென்சி போலவே நீங்கள் இடியை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 95% வழக்குகள் யார் மீது இருக்கின்றால் எதிர்கட்சி மீதுதான் உங்களால் திணிக்கப்பட்டு வழக்குகள் போடப்பட்டு, நீங்க அதே கொடுமை உங்கள் லாபத்திற்காக நீங்க செய்கிறீர்களா இல்லையா? அது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண மதிப்பிழப்பு போது போது பிரதமர் படம் போட்டு ஒரு முழு பக்கம் விளம்பரம். யார் பண்ண விளம்பரம்? பேடிஎம் விளம்பரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்தை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்று வந்தது. இன்றைக்கு பேடிஎம் சரியாக செய்யவில்லை, அது மூடுகின்றதுக்கு காரணம் இருக்கு. அப்ப மக்கள் கேட்பார்களே, இது என்ன நியாயமா? அதுல என்ன ஆயிற்று, என்ன தவறு நடந்தது கேட்பது என்ன நடந்தது? அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் தொடர்ந்து எங்கள் முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் எங்கள் இளைய தலைவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நீட்டை கண்டிக்கிறோம், நீட்டை எதிர்த்தோம். எங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமா குழந்தைகள் இழக்கிறார்கள்? முதல் தலைமுறை குழந்தைகள் பட்டதாரி ஆக முடியாமல் தவிக்கிறார்களே, வேண்டும் என்றே பிற்படுத்துவோர் மருத்துவர் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக கொண்டு வர சட்டம் தானே இது? ஏன் இன்றைக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலே, குறிப்பாக நம்ம சபாநாயகர் இருக்கிற தொகுதி கோட்டா தொகுதியிலே என்ன நடக்கிறது? கோட்டா மாநிலத்திலே எவ்வளவு குழந்தைகள் தூக்கிட்டு சாவுகிறார்கள். காரணம்
நீங்கள் கொண்டு வந்த நீட் இதையாவது மனிதாபிமானத்துடன் இன்றாவது தமிழ்நாட்டுக்காகவும் ஏன் இந்த கோட்டாவிலே படிக்கின்ற இளைஞருக்காக நீங்கள் செய்த வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன். அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் 2018ஆம் ஆண்டு இதே நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் சென்னையில் வந்தார். அப்போது ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டார். அதிமுகவை கைப்பற்றி அவர் முதலமைச்சர் ஆகலாம் என்ற ஒரு கனவு திட்டத்துடன் அப்பொழுது வந்தார். அப்போது அவர் சொன்னார், நீட் இந்த ஆண்டு நீட் வராது, இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் நீட் விலக்குக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் என்று மக்களை ஏமாற்றினார்கள். அது மட்டுமா செய்கிறீர்கள், நீங்கள் இந்த தமிழை வளர்க்கிறீர்கள். பேசினாரே, சோழர்கள் வளர்த்தார்கள், சோழர்கள் தமிழை வளர்த்தார்கள். எங்க போனாலும் பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழை பேசுறார், திருக்குறள் பேசுறார். இதே கர்நாடகா போனா கன்னடத்தில் பேசுறார், கேரளால போனா கேரளால மலையாளத்தில் பேசுறார், ஆந்திராவுக்கு போனா தெலுங்குல பேசுறார், இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் போனா அங்க போய் பெங்காலி பாஷையில பேசுறார். அதாவது எங்க ஊர்ல ஒரு சொல்லுவாங்க, அதாவது கோழி பிடிக்கிற வந்து பொப்பொன்னு கோழியை கூப்பிடுவானா, கோழி நினைக்குமா ஆஹா நம்ம மாதிரி பேசுறானே நமக்கு நண்பர் நினைவான், அவனுக்கு தெரியும், அப்பதான் தெரியுமா அவன் கோழியை வறுத்து சாப்பிடுவதற்காக அந்த கோழி பாஷையில பேசினான் என்பது. அதே போலதான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்க்கிறேன், குறிப்பாக நான் கேட்பது இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீம் என்ற ஸ்கீமை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த ஸ்கீம் மூலமாக பயன்பெறுகள் யார் என்றால் பணக்கார முதலாளிகள் தான். குறிப்பாக எங்கள் திருப்பூரிலே பார்த்தீர்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் எங்கள் திருப்பூரிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறோம் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீமை கொண்டு வாருங்கள் என்று. ஆனால் இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் நீங்கள் கொண்டு வரவே இல்லை. இன்னும் சொல்வென்றால் there has been a large scale apathy towards MSMEs, especially textile industry in Tamil Nadu. For over 2 years we asked you to pay attention to this. In 2022 our chief minister requested an emergency credit line guarantee scheme MSME in garment sector, particularly the Tirupur cluster in Tamil Nadu, which is a key foreign exchange earner for the country. The sector is undergoing a severe crisis and witnessing a sharp decline in month-on-month growth rate as a result of the economic impact of COVID-19, the Russia-Ukraine war, and the economic slowdown in the West. Lacks of job, particularly for the rural women, who from a significant chunk of the workforce are in danger. We asked a PLI scheme and a special emergency credit line guarantee scheme for MSMEs in the garment sector with 20% additional collateral free credit, but got nothing. Last month, the Textile Mill Association submitted a joint memorandum to Union Finance Minister seeking extension of 1-year moratorium for repayment of the principal amount, conversion of 3-year loans under the emergency credit line guarantee scheme into 6 years term loans, and extension of necessary financial assistance to reduce the stress of working capital. I wish and hope at least the finance minister heeds to this. அதே அவை தலைவர்களே, குறிப்பாக ரயில்வே துறை மூலமாக எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த பாவமும் வரவில்லை. நான் ரயில்வே துறை அமைச்சர் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். நான் 2019ஆம் இருந்து கடந்த 5 ஆண்டுகள் பல முறை அவரை சந்தித்து கடிதம் மூலமாக கொடுத்து, குறிப்பாக எனது தொகுதியில் எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜ் நிலுவையில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகளாக இந்த பணியும் முடியடையவில்லை. இந்த 5 ஆண்டிலும் நீங்கள் உண்ட எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே செய்யவில்லை. இப்படியாவது இனியாவது நீங்கள் இந்த எலிபென்ட்ஸ் கேட் பிரிட்ஜை செய்வீர்கள், தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பாக சென்னைக்கு தேவையான இதை செய்வீர்கள் நம்புகிறேன். அதே போல் பார்த்தீர்கள், உலகத்திலே எங்கும் நடக்காத ஆச்சரியம். பிரதமர் 2019 அடிக்கல் நாட்டினார், ஒரு செங்கலை வித்தார். இன்றைக்கும் மதுரை எய்ம்ஸிலே ஒரே செங்கல் தான் இருக்கிறது. அந்த செங்கலுக்கு தவிர சுற்றி காம்பவுண்ட் வாலை கட்டியிருக்கிறார்கள். ஒரு கொடுமை என்ன என்றால் அவை தலைவர்களே, இன்று மாணவர் சேர்க்கை ஆரம்பித்து விட்டது. அந்த மாணவர்கள் இங்கே படிக்கிறார்கள், ராமநாதபுரத்திலே வேறு மாவட்டத்திலே போய் படிக்கிறார்கள். உண்மையில் பார்த்தீங்கன்றால் இதற்கு சிபிஐ பல வழக்குகளை போட்டிருக்கிறது. என்ன வழக்கு? கட்டமைப்பு இல்லாத நிறுவனங்கள் எப்படி மாணவர்கள் சேர்க்கை செய்யலாம், அவ்வாறு சேர்க்கை செய்தால் அது இந்தியா சட்டத்தின்படி குற்றம் இருக்கிறது. அப்பொழுது எய்ம்ஸ் கல்லூரி கட்டமைப்பே இல்லாமல் 300 கல்லூரி போனீங்களே, அப்போ யார் மீது சிபிஐ வழக்கு போட வேண்டும்? ஹெல்த் அமைச்சர், சுகாதார அமைச்சரா, பிரதமரா, யார் மீது அவர்கள் வழக்கு போட வேண்டும்? உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம், எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா? நான் கேட்கிறேன். இவ்வாறு தொடர்ந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்காதீர்கள். தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பாக ஒன்னும் சொல்ல போனால் அறிஞர் அண்ணா சொல்வார்கள், வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது. இப்பொழுது என்னன்னா, தெற்கிலிருந்து வர நிதியிலிருந்து வடக்கு செழிக்கிறது, கொழுக்கிறது தான் சொல்லணும். இன்னும் பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டில்
நாங்கள் எங்கள் வரிப்பணத்தை நாங்கள் ஒன்றிய அரசு ₹1 கொடுத்தால் எங்களுக்கு வருவது 29 காசு. ஆனால் இது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அவர் கொடுக்கின்ற ₹1க்கு ₹2.73 காசு, பீகாருக்கு ₹7.6 நான் சொல்கிறேன் ஐயா, இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக வளர வேண்டும். ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலே நாங்கள் எதுவுமே நாங்களுக்கு இல்லை. ஆனால் தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்காதீர்கள். அதே போல் எங்கள் தமிழை வளர்கள். இந்தியாவின் முதல் செம்மொழி தமிழ். நாங்கள் எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள், நாங்கள் அத்துணை மொழியும் ஆதரிப்பவர்கள், வரவேற்பவர்கள். ஆனால் மொழி திணிப்பு என்று வந்துவிட்டால் நாங்கள் எங்கள் மொழியை காப்பாற்ற தயங்க மாட்டோம், எங்கள் உயிரையும் கொடுக்க தயாராக இருப்போம். அவை தலைவர்களே, மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் நன்றியை தெரிவித்து, வாழ்க தமிழ், வாழ்க கலைஞர், வாழ்க தலைவர், வாழ்க தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறி விடைபெறுகின்றேன். Thank you. Sri Sogata Rai. Sir, I rise to speak on the budget. Though this Ghamandia finance minister is not there to listen to our speech. No, that he word is the will Ghamandia not, that, finance minister of the Ghamandia Pradhan Mantri. They do not. You can do away with that word. They do not think it is necessary. It's not written. I'll speak about you, Mr. Vaishnav. Wait a little. The finance minister has given a statement which is provoking all the states. Sir, you know that Tamil Nadu has backed Kerala's suit in Supreme Court against centre's move to stifle states. Karnataka CM is leading a march to Delhi. West Bengal Chief Minister had a dharna for 2 days demanding money for NREGA. This government wants to finish the opposition-ruled state. That is why the budget is for the rich. It's an anti-poor budget. One example will make it clear. The best project for the poor in this country was the MG-NREGA. Its allocation was 1,11,000 crore in 2021. Now it has come down to 86,000 crores. So for the poorest of the poor, there is no money. Not only that, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 10 crore landholding farmer families were getting 6,000 per year. There was expectation that it would be raised to about 9,000, but that has not been done. They believe they are already coming to government. I want to remind them, in 2004, you were here in Parliament. They gave the slogan, India Shining. Vajpayee preponed the election. What happened? BJP lost. Do not take the people of the country for granted. अभी से बोल दिया कि हम जीतेंगे, ये it is not wise. And while on this, I want to tell the finance minister, you have given every day you are saying that opposition-ruled states are not cooperating in railway projects. You had said that West Bengal does not seem interested in new railway projects. I totally condemn your statement. The metro projects, which were started in 2010 when Mamata Banerjee was railway minister, they have not been finished yet. And the railway minister is only interested in Vande Bharat trains, fast trains at high cost, denying the poor. Now, one Udiya MP is talking to him. He is also from Odisha, so I won't disturb him anymore. So,
This is my point against this government. Sir, if you see the budget speech, you are a very careful reader of the budget speech. You will not find certain words. Minority is not mentioned. Working class is not mentioned. And even artificial intelligence is not mentioned. Sir, in West Bengal, 21 lakh NREG workers were not being given their wages for 3 years. And then ultimately, we went on a dharna, we met the Prime Minister, nothing happened. The West Bengal Chief Minister has promised that she will give their money by 21st February. So, this is what the government is all about. So now, let me come to the budget. First, let me mention that one of the major jobs in a budget is to bring structural reforms in the economy. The government has lost the plot. The major structural reforms were carried out between 91 and 96 when Manmohan Singh was finance minister. Tax structures were reformed between 96 and 98. Between 2004 and 14, structural reforms were done in the securities market. After that, none. Yes, GST was a structural reform, but GST laws disrupted existing trade structures. IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, was a structural reform, but less than 20% of the bank loans or financial creditors are being recovered through IBC. So IBC failed as a structural reform. Sir, it has been mentioned that there is nobody in the government today who is able to think of policies which will benefit the economy in the next 10 or 20 years. There is nobody equal to Dr. Manmohan Singh. There are not even 3 officers in the government, and including the finance minister, who are acknowledged as world-class economists. They suspect anybody giving advice from outside. No competent economist in the whole government. Sir, the finance minister did not mention rampant unemployment. She had not mentioned that 30,000 farmers and agricultural laborers had died by suicide, nor about women's low participation in the workforce. Sir, you may also have noticed that social sectors have received a cut. You are interested in education, sir? Cuts in the government was supposed to spend 1,16,000 crores on education, but ended up spending 1,08,000 crores. Similarly, on health, it budgeted an expenditure of 88,900 crores, but it actually spent 79,000 crores. Social sectors are being cut in this Adani Ambani government. Now, the core of course schemes meant for the most disadvantaged sections of society, such as SC, STs and minorities, have witnessed cuts. The umbrella scheme for development of scheduled castes budget is only 6,780 crores against budget estimate of 9,409 crores. For minorities who are neglected under this government because they are busy with Ram Mandir, the fall has been sharpest. In 22-23 budget estimates peg the expenditure at 1,810 crores. As it turns out, this year, the government actually spent 233 crores, just 13% of the budgeted amount. In the current year, BE was 610 crores, but the RE is just 555
crores. Sir, all the social sectors have received big cuts. Now let me go to something else. Sir, all they are interested in high-profile visible schemes like Awas Yojana and sanitation. Apart from that, they have done nothing. They have promised one rooftop solar scheme. It's all fraud. You will not be able to fulfill 10% of your target in rooftop solar scheme, as Supriya Sule knows very well. So 61% cuts. No, one man was telling us that day, na, Samir? Yes. 61% cut for UGC. Now let me go to something else. Center's food, fertilizer and petroleum subsidy to increase by 7% to 3.81 millions. Personal IT, only personal income tax has saved this government is more than corporate income tax. Sir, now let's talk about the macroeconomics. Between 2014 and 22, GDP grew at an average of 5.6%. But India's growth rate was even higher from 2000 to 2010 at 6%. Economists say India's economy will need to grow faster than current 6 to 7% rate in order to absorb growing number of entrants in the work area. Sir, what does Raghuram Rajan, world-class economist, say? He said, India is poorest among BRICS nations. BRICS is Brazil, Russia, India, China, South Africa. It also has a much longer distance of travel before it reaches their level of per capita income. Growth has been good, but it has to be set in perspective. What is the per capita income? India's unemployment remains high compared to pre-pandemic levels. According to CMI, Center of Monitoring Indian Economy, it exceeded 10% in October. Among young people aged 15 to 34, unemployment in the age group stood at 45.4% in 2023. Women's participation in the labor force is one of the lowest in South Asia. India's female labor force, ये नारी शक्ति बोलते हैं ना, कोई जवाब देने वाला है नहीं. हेमा मालिनी जी केवल है, वो शायद जवाब देगी. India's female labor force participation fell from 25% in 2014 to 24% in 2022. It is women's participation is lower than regional neighbors Bangladesh, Sri Lanka and Pakistan. Sir, lot of India spending on research and development, they are saying we'll give 1 lakh crores. You know, it is the lowest in the world. Spending has fallen in the past decade. Share of research and development under this section has dropped to 0.7% of GDP, lower rate than any BRICS country, and far below what is it for South Korea, 5%, and ours is 0.7%. What is for Israel, 5%. Ours is 0.7%. One thing I mentioned, sir, you edit a paper. India's press freedom ranking is declining. India's ranking dropped to 161 in 2023. You know, NewsClick, what happened to them? Down from 140 in 2014 and just above Russia. We have come down to Putin's level. One Putin has come to this front bench. He will soon take over all power. A free press is crucial to the economy.
This is Jamini Iyer has written. She is the CEO of CPR think tank. When somebody comes from outside to invest, you will find out about press freedom. Now, press freedom is all. Professor Roy, you are very much aware. Insinuation is not allowed in this house. What? Insinuation is not allowed in the house. And your reference to some invisible person, in the manner in which we have stated will not go on record. Mischief. Adrisha Shakti, as Supriya correctly pointed out. सब अदृश्य शक्ति चारों तरफ चल रहा है. Sir, you know of economist called Pranab Bardhan. He is in Berkeley. He is one of the reputed economists of the world. He said, India's data may be overstating the country's performance. ये इसमें भी घपला है. Sir, Raghuram Rajan said another thing. Alongside an emphasis on building physical capital, there has not been enough attention paid to creating human capital. This was a worry, given India's unemployment crisis. We are flying blind, Raghuram Rajan said. Udaisi, you know about him. Without credible data on jobs, malnutrition levels in many parts of India, in Odisha, in Kalahandi, Bolangir, are higher than many countries in sub-Saharan Africa, which was unacceptable for a fast-growing economy. एक तरफ बोलता हम वर्ल्ड में थर्ड हो जाएगा और बोलांगीर कालाहांडी में सब-Saharan अफ्रीका से भी malnutrition ज्यादा है. This statement is wrong. What? This is by Raghuram Rajan, not by me. Might be an old one. Today, Kalahandi is the second largest paddy growing district. It is quoted in The Economist, which is a more reputed no, it's not factually correct. It is not factually correct. 115 क्या? स्पीकर का डायरेक्शन. एक विदेशी आदमी को ये बार बार कोट करे सर. रघुराम राजन हमारा नागरिक नहीं है और इस सदन में जो है हमने जो संशोधन किया है कि उसको बार बार कोट नहीं कर सकते. What is the point of order? Which one? ये गलत जानकारी दे रहे हैं सर. केबीके के बारे में जो है ये केबीके के बारे में जो इन्होंने कालाहंडी के बारे में बोला है सर, यदि इनके पास कोई पेपर है केवल रघुराम राजन के तो इनको जो है भेजना चाहिए, नहीं तो इसको एक्सपंज करना चाहिए सर, क्योंकि एक गलत बयानी कर रहे हैं. 115 स्पीकर का डायरेक्शन ये कहता है कि मेंबर यदि गलत बोल रहा है तो दूसरा मेंबर उसको सुधार सकता है. ये गलत नहीं बोल सकते सर. और एक विदेशी को बार बार कोट कर रहे हैं. वो रघुराम राजन हमारे माँ पिता नहीं है सर. ही इज नॉट माई फादर. या यहाँ के इकोनॉमिस्ट नहीं है. वो मनमोहन सिंह जी नहीं है. आप उससे छोड़िए और आगे बढ़िए. सर, The Economist on November 13 said sluggish investment is holding India back. On the table of the House, investment as a fraction of GDP, which exceeded 40% in 2008 UPA. No. Is now This cannot go on like this, Professor. As per Barclays Bank. The money is not going into factories. We have to follow the rules. You're saying something. We have to follow the rules. If we are quoting some statement, yes, then you have to place it on the record. Please. Just after this, I have the papers with me. The money is not going into factories, research or other parts of private business. 36.5% of banks but you are reading from sanctioned are for roads and bridges and another 20% for power. For chemicals, only 2.3%. Chemicals is an index of country's development. And it has dropped from 3.4%. Foreign portfolio investment only recently turned positive after more than 2 years of outflows. And FDI fell by foreign direct investment, fell by 16% to 71 billion in March 31, 2023.
New announcements have crashed to a 20-year low, reflecting insufficient animal spirits in the economy, as per CMI. Sir, Indian business climate remains difficult. The touted tax changes have too many tires and too much discretion in the hands of feared revenue officials. Playing field is not level, with a few local giants perceived to have gamed the system. Of the $120 billion worth of projects scheduled to be completed by March 2023, only 72 billion were present. This is by Eshwar Prasad of Cornell. The future is a fraught exercise. The country's infrastructure still has many gaps in supporting a vibrant manufacturing sector. The education system is not equipping young people with the vocation and skills needed for a modern economy. Job growth has been weak, with little net employment in the manufacturing and service sectors. This will lead to risks of social instability. Sir, आप बेल बजाए? टाइम खत्म हो गया क्या? टाइम खत्म हो गया. 2 मिनट दे दीजिए. 2 मिनट में खत्म करेंगे. ठीक है. आप सर शिवसेना के लीडर है, आप तो देंगे. A few politically well-connected conglomerates have accounted for a significant growth, leading to a concentration of economic power. The unfinished reform agenda is taking a backseat. Well-functioning legal system, a free press, all key to maintaining investor confidence. Each of these pillars have been eroded. In a government prickly about criticism, government is switching into triumphalist mode rather than pushing forward with the unfinished economic agenda. Sir, the biggest beneficiaries of India's stock market boom are the political insiders. Best connected of all is Gautam Adani, who has a relationship with Modi. Billionaire families. Sir, I am quoting from Economist. I am quoting for Economist. Sir, billionaire families like Adanis and Ambanis are Modi's partners in state building, but they are not globally competitive. 353. India has failed to capitalize on rising labor costs in China. Bangladesh was more entrepreneurial and has higher GDP per capita. India may benefit from diversification from China, driven by national 353 सर. किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं सर. इन्हीं की पार्टी के एक सांसद है जो इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो अडानी को मदद कर रहे थे. क्या ये सही है? मैं तो शौकत बाबू को ईमानदार समझता हूं. ये हमेशा अडानी की बात करते हैं. इन्हीं की पार्टी की सांसद कहती है कि उन्होंने अडानी की मदद की. क्या ये सही है? ये गलत है. आप अपनी बात खत्म कीजिए. आप अपनी बात खत्म कीजिए. Anything unparliamentary, I am ready to hold my ears and be expunged. But I shall not take this nonsense from the professional hecklers. Sir, World Bank, sir, yes, suniye. World Bank's Human Capital Index, which measures countries' education and health outcomes on a scale of 0 to 1, India's score is 0.49. Below Nepal, Kenya, both poorer countries. China scored 0.65, on par with Chile and Slovakia, which have higher GDP per capita. India has hundreds of millions of underskilled youngsters. In 2019, less than half of India's 10-year-olds could lead a simple story, and compared to 80% of China's children and 96% of American children. India's path is neither that of China nor that of the West. India might become the forerunner दादा खत्म कीजिए. हो गया सर. एक 4 sentence. Rather gloomy model for populous, low-income countries managed without a powerful, effective government apparatus or globally competitive
manufacturing center. Political connection deliver easy credit. India's growth has been debt-fueled. In the current moment, there is a natural fit between the promoter model of capitalism, personified by Adani, and Modi's popularism. This is said by Ashoka Modi, one noted man, economist. He has written a book called India is Broken. Is India? सर, इसलिए मैं कह रहा हूं निर्मला सीतारमण का बजट लोगों को साम्य नहीं दे रहा है, लोग आर्थिक स्थिति को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल बोलना कि हम 3 नंबर हो जाएगा और आधा लोग गरीबी में रहेगा, वो कोई सलूशन नहीं है। इसलिए मैं ये बजट को विरोध करता हूं। एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, I particularly appreciate the government vision of Vikasit Bharat, aligned with the Honorable President's emphasis on establishing this vision on the pillars of youth power, women power, farmers, and the poor. Sir, I want to mention that under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, the Andhra Pradesh state government has been successfully working on this for the past 56 months. As is clear in our name, YSR, which stands for Yojana Shramika Raitu, our party is founded on the principles of providing welfare and development of the youth, women, farmers, and the poor, which is the basis for Center's Vikasit Bharat, sir. Sir, in 2022, India grappled with agricultural challenges, witnessing reduced wheat and rice crop production due to heat waves and shifting of monsoon patterns, sir. Paddy farmers incurred losses from diminished grain quality and situation worsened in 2023. Notably in Andhra Pradesh, facing increased drought conditions impacting chili and cotton crops, sir. The International Food Policy Research Institute predicts a 16% decline in India's food production and a 23% increase in those at risk of hunger by 2030 due to climate change, sir. The Finance Minister discussed agriculture and food processing, emphasizing the intensified efforts for value addition in the agricultural sector and elevating farmers' income, sir. However, the upcoming year's allocation for this scheme is only 729 crores, sir, marking 21% decrease from last year's budget estimate, sir. Government should consider increasing the financial assistance allocated on this pivotal scheme, sir. Fertilizer Department actuals for financial year 2023-2022 are 2,51,369 crores. However, the interim budget only allocates 1,64,150 crores, sir. I request the central government to ensure that even if the fertilizer allocation is reduced on a national-wide scale, it must not be reduced for coastal regions that have suffered the brunt of cyclones, sir. Sir, the Labor Ministry has seen a decreased allocation from 13,221 crores to 12,531 crores, sir. Scheme-wise, these changes is best reflected in the allocation to the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana scheme, whose allocation has been cut down from 2,272 crores to 150 crores, sir. Unemployment being a biggest harm facing the youth of today, sir, such decreases do not reflect the need of the hour, sir. Significant investment in employment generation is needed, sir. In this next context, the stagnant budget allocation of 538 crores for the upcoming year, sir, the same as last year, made to the center's capacity building and skill development scheme does not seem adequate, sir. Bharat must take advantage of the demographic window, hence investing the job creation to maximize our greatest resource, our people, is crucial for economic success, sir. Sir, increasing the funding for the scheme for safety of women,
from 321 crores to 955 crores deserves applause, sir. Making a woman feel safe also encourages her to engage in variety of other productive activities that can increase her quality life, sir. However, it must be considered that the revised projection of 22-23 was 1008 crores, sir. Hence, the increase in allocation could have been more considerable, keeping in view that these schemes are undoubtedly effectively using the financial allocation supplied and have provided to need even more allocation needed than provided in this interim budget, sir. The rise of artificial intelligence, unfortunately, we weaponized against women, regrettably being done via manner of deep fake, sir, among other defensible acts, sir. Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana has the second highest budget among all schemes, sir, 2024 and 25 at 80,671 crores, sir. This new allocation boost to PM Awas Yojana would also prove tremendously beneficial to women since the initiative incentives women's ownership of houses, sir. The Andhra Pradesh government has previously submitted a proposal for about 4,000 crores to be disbursed under special assistance of capital investment, which would go on to benefit the women of our nation via schemes such as PM Awas Yojana and others, sir. And also, it contributes to the cause in states such as Andhra Pradesh, which have exhibited solid track record of fund usage in the past, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program remains the largest work guarantee program in the world, sir. There has been a continuous decrease in budgetary allocations from MGNREGS from 98,000 crores in 2021 to 2022 to 73,000 crores, sir. In 2022-2023, further reduced down to 60,000 crores, sir. In 23-24 and for the upcoming year, it remains stagnant 86,000 crores, sir. Same as last year's revised estimates. The Andhra Pradesh government has consistently sought as increase in MGNRGA mandates, proposing a augmentation from 100 to 150 days for individuals and a total of 16 crore mandates, sir. Given the prevailing drought condition leading a rural migration, the state urges the central government to support its economy by enhancing NREGS man hours and introducing new initiatives under the scheme, sir. Sir, I find it essential to highlight that the promise of special category status of Andhra Pradesh made during its bifurcation in 2014 remains unfulfilled to this day, sir. Despite promise of the then Prime Minister and prior approval from the Cabinet, this commitment is not just a demand but a right of the people of Andhra Pradesh, sir. The unscientific bifurcation process which led to the loss of the capital city of Hyderabad and crucial infrastructure has resulted in severe economic and developmental and institutional challenges for the successor states, sir. Furthermore, inheriting higher debates and liabilities along with receiving only 45% of the revenues despite compromising 58% of the undivided state population, given the adverse impact on the financial capacity, Andhra Pradesh urgently requires greater financial space for developmental activities, sir. It is the responsibility of the state government, central government, to compensate for the loss of suffered by the successor states, sir. Therefore, I urge the government to formulate a implementing time-bound plan for granting special category status to the Andhra Pradesh promptly, providing the necessary support, be a financial or otherwise, to address the unfair losses incurred due to the illegal bifurcation, sir. Sir, the Polavaram irrigation project is a national important project and is very important for the people of Andhra Pradesh. The total cost of the project is 55,548.87 crores at 2017 to 2018 price level as approved by the Technical Advisory Committee, sir. But these revised cost estimates is not yet approved by the central government, sir. Further limited the funding of phase 1, completion of 12,911 crores, sir.
but this amount is inadequate for the providing rehabilitation and resettlement to the 36 additional villages and 48 habitations. Hence, the Andhra Pradesh government submitted a proposal of revised cost estimates of 17,144 crores, sir, for phase 1 of the project, which includes the cost of such rehabilitation as well, sir. It is requested to approve the revised cost estimates approved by the Technical Advisory Committee and the revised cost estimates for the phase 1 and to provide compensation of the additional cost of 4,222 crores incurred by the Andhra Pradesh government for the resettlement and rehabilitation, sir. Sir, the NTC mill in Tirupati is among the 23 textile mills run by the National Textile Corporation across the country, sir. Production activities in all NTC mills were suspended from the March 2020 due to COVID pandemic. This mill has more viability in equipped with sufficient resources, sir. The central government should take immediate action for fully functioning of the NTC mill in Tirupati for relieving to the BPL families supporting through the operation, sir. Thank you, sir. संतोष कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में सदन में चर्चा के लिए अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस अंतरिम बजट का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इस वर्ष भारत रत्न देने का काम किया है। यह मात्र आदर सम्मान और पुरस्कार नहीं है, बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए उनके सम्मानित नेता के प्रति सम्मान है। इसे बिहार के 14 करोड़ जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह पिछड़े, अति पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के लोगों का सम्मान है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं और उन्हीं के सिद्धांतों और वसूलों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और जो आरक्षण उन्हीं की देन है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा और शोषित समाज आज उनका ऋणी है। इसके साथ श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला है। उनका सम्मान किसी पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है। पुनः मोदी जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के बाद अब तक का लोकसभा आम चुनाव से पहले यह 7वां अंतरिम बजट पेश हुए हैं, जो असल में वोट ऑन अकाउंट होता है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर धीरे धीरे लोक लुभावनी वाला अंतरिम बजट का रूप ले लिया था। मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री जी को कि हम फिर से मूल रूप की ओर लौट रहे हैं। यह हिम्मत उन्होंने दिखाई है, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। महोदय, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, उसके पहले भारत को फ्रेजल 5 में रखा जाता था। इन 10 सालों में हमने जब टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाने का सफर तय किया है, यह बजट उसका प्रतिबिंब है। लोक लुभावनी नहीं, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मार्ग पर यह बजट प्रशस्त है, जिसमें किसान, युवा, गरीब, महिलाओं को विशेष ध्यान में रखा गया है। हमें उम्मीद है कि 2024 में जब भारी बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार वापसी होगी, तो जुलाई में जब पूर्ण बजट देश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें 2047 तक का भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यह हमारा आत्मविश्वास है। महोदय, अमृतकाल का यह दूसरा बजट है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल से कर्तव्य काल की ओर बढ़ रहा है। महोदय, मैं पूर्वी भारत के बिहार राज्य के सीमांचल और पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। दशकों तक कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में रही, उसने बिहार को, विशेषकर सीमांचल और कोसी के इलाकों को पिछड़ा बनाए रखने का काम किया, जबकि कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों में गरीबी है, गुर्बत है। मोदी जी के आते ही दशकों से उपेक्षित रहा यह क्षेत्र मोदी जी की दृष्टि पड़ी और पूर्णिया और सीमांचल के कई जिलों को एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट में शामिल करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे खुशी है
इस बात की आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास का इंजन बनाया जाएगा। मैं श्रीमान सीमांचल के इलाके में मक्का और मखाना की खेती बिहार में खेती सबसे अधिक होती है। हमारी मांग है जब पूर्णकालिक बजट पेश हो तो सीमांचल में मक्का और मखाना आधारित उद्योग स्थापित करने के दिशा में पहल किया जाए, जिससे हमारी सबसे बड़ी समस्या जो मानव संसाधन के पलायन पर रोक लगाया जा सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने R&D के क्षेत्र में देश के युवाओं के लिए 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन 50 सालों के लिए देने का फैसला किया है। जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं तो R&D के क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनरशिप का यह भी देश को लाभ मिलेगा। मोदी जी जो हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं उसमें भी हम लिवरेज कर पाएंगे। R&D के क्षेत्र में अग्रणी होने से हमें सेवा आधारित अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं निर्माण आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 25,000 रुपये तक के छोटे डायरेक्ट टैक्स डिपॉजिट को खत्म करने का डिस्प्यूट को खत्म करने का निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को, खासकर जो सीनियर सिटीजन को राहत मिला है, जिसमें 10 साल तक के पुराने रिटर्न को लेकर जूझना पड़ रहा था। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान गरीब किसान और मजदूरों को देने का काम किया है। मनरेगा में वित्तीय वर्ष 23-24 में 60,000 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट को बढ़ाकर 86,000 करोड़ बजट करने का काम किया गया है। वित्तीय घाटे को कम करते हुए भी वित्त मंत्री जी ने 23-24 में PM आवास योजना में 54,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,671 करोड़ खर्च किए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 21 में नैनो लिक्विड यूरिया पर जोर दिया, तब से आयात होने वाले केमिकल यूरिया का डिमांड घटा है और नैनो लिक्विड यूरिया देश के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ा है। इस कारण वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भी हम यूरिया का सब्सिडी कम कर पाए हैं। इससे देश के विदेशी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में बचेगा। हमें इस बात पर भी हर्ष है कि PM कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन अगले 5 साल दिए जाने के लिए बढ़ाया गया है। यह सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार यह अनाज अपने बफर स्टॉक से दे रही है। ये 80 करोड़ गरीब परिवार अपने इस बचत का खर्च शिक्षा और अन्य स्वास्थ्य और अन्य कर पाएंगे। लोहिया जी ने अंत्योदय कल्याण की बात की थी, यही अंत्योदय सरकार की या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री जी ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत से जोड़ा है और सर्वाइकल कैंसर से पूरे विश्व में जितनी मृत्यु होती है उसका 1/4 केवल भारत में होता है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसकी चिंता व्यक्त की है और 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए वैक्सीन का प्रावधान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी का सरकार लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आजीविका की दीदियों को। इसके लिए बिहार में पहले से काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम पूर्व से करते आए हैं और केंद्र की सरकार ने, आज मोदी जी की सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को